Welcome to Reliance Trading Academy, and let us begin this topic: how to become successful trader. So, after going through the course, whatever we have learned in our course, the very basic thing that we have learned as a part of controlling your emotions, okay, when it comes to trading, is obviously fear and greed. These are the, you can say, the most affected emotions that plays on a trader's mind. First is fear and second is greed. Fear, डर होना जरूरी है, मुझे तो ऐसा लग रहा है, मतलब over a period of time whatever I have gone through, then I have learned that yes, fear is required. डर क्या बोलते हैं, डरना जरूरी है. Otherwise what happens, when like once a trader becomes overconfident, like most of the times traders end up losing whatever they have earned. Okay, like a very recent example, I'll take you to Vedanta chart only. See, I had two positions. I had positions in Vedanta. I had bought Vedanta at 300 and 315 or somewhere between 315 and 320. Okay. On this day, 18th Jan. Okay. After that, it went up. The next day, towards the end of the markets, my profit was 38,000 something. Okay. So I had two call options and one futures lot, both long, like all long position. Okay. So towards the end on 19th Jan, I was in profits of around 34 to 38,000. Next day morning, my profit was 64,000. Okay. But I was so very confident about my analysis that it will at least make to 350. So what happened? My confidence override my analysis. Okay. What was happening then when the markets, when it reached to 340, I was there sitting in front of my screen watching what was happening. So the shorts were initiated, but only because of my confidence I held on to my position. And it started falling the next day. After a weekend, I guess, then Adani news came and it continued falling. I was still hoping. So this word who, okay, who, I wish, I hope, okay, it got me stuck. Okay. And eventually I booked profit of only 7,000 rupees. So from 60,000, I came down to 7,000. But while after booking that 7,000 profit also, I was happy. Why I was happy? Because I managed to gather that much courage to exit. Because otherwise what happens, once you look at the profits, na, itna profit to aa gaya mere. 60,000 मैंने एक बार दिखले, I have seen 60,000. Now it becomes very difficult for us to book a profit of 5,000 or 6,000 because we expect it to at least go back up a little. And we then hesitate to exit. Okay. But I gathered that courage and I exited, and I was so very thankful to myself that I did exit that position, book that profit of 7,000, whatever I got, because after that it continued falling. Because then after that, Adani effect came and the market tumbled and up. So I was very thankful. So it is very important to exit your position in time. So this is what happens. Okay, so about fear and greed, it is very important to be fearful also at times. And greed, we have already learned a lot about fear and greed. Okay, how to control your greed. Controlling greed is like जो मेरे साथ में हुआ ना कि I was expecting, I wanted it to go a further up, a little like up to 350. So instead, what I should have done, I should have trailed my stop loss and bought it to maybe 335 or somewhere, like because it had reached to 340, I should have trailed my stop loss. So I would have exited somewhere in like 35-40,000 rupees I would have done. So to control the greed, the method of controlling greed is to trail your stop loss. So how to, we have already covered all these things in our course, how to calculate your position size. See,
calculating your position size is directly related to control your fear. सबसे बड़ा डर क्या चीज का होता है मार्केट में? whenever we enter the markets and we practice trading or investing, what is the biggest fear? The biggest fear is of facing losses. So once you calculate your position size as per your risk appetite, how many shares you want to trade, how many quantity you want to buy or sell, once you have done that, obviously the calculation has to consider your stop loss also. Okay, so depending upon what is your stop loss, we calculate how much risk you are ready to take, and by using the formula of basic divide, okay, and you can calculate the position size. So once you have done that, your fear factor is taken care of. Like, fear has no role to play. Then after that, what happens is the greed factor. Okay, and we have already spoken about it. Now you should have your strategy not only. Hello, am I audible? Sorry, yes, we are able to hear you. Okay. So I don't know what happened to Zoom. It showed me that I got signed out. Anyways. Okay, so you should have strategy not only to enter the trade, but also to exit the trade. Okay, what happens is we have a strategy, we write down all the rules and everything. Okay, but once the market opens, okay, let's say we have planned to buy a certain stock at the price of, let's say, 350, and after the markets are open, it is trading at 355. Okay. So we keep, initially what we do, we keep waiting for the price to come down to our buying price. Okay, so we have planned to buy it at 350 and we are waiting for the price to drop by 5 rupees so that we can execute our buyout. What happens is, because our mind is very fast, okay, we expect things to happen very fast, right? So for that, obviously we all are aware of speed of our mind, right? So right now, even though I'm sitting here in Virar, in my mind I can reach Dr. Shaiju's clinic within a fraction of a second. So our mind's speed is like super speed. Okay, we can travel ahead of light also. But what happens is that markets will work with their own pace. So because we have decided to enter at 350, it is not going to be like as soon as the market will open, it will immediately come down to 350 and you will get the opportunity. No, it tests your patience. Market will work with its own time. It will take its own time. And this time, as the time passes by, what happens? We start getting frustrated. है ना? हम लोग को ऐसा लगता है क्या कब आएगा, when the price will come, or maybe it will be like I might miss my opportunity also. Okay, we start getting that fear of missing the opportunity. Okay? That is also termed as FOMO, fear of missing out. And eventually, let's say after waiting for 30, 45 minutes or 1 hour, what happened? Then we convince ourselves, chalna yaar, my target is 370 na. So let me leave that 5 rupees and enter at 355 only. Why to wait for 350? Let me enter at 355. My target is 370. Okay. And what happens is that we enter the trade and then the market comes down to 350. Now we have already entered. Okay. Now we cannot add any position. Some people even add more positions after 350 at 350. Okay. But during that time, we start getting frustrated. We start going into the panic mode. And if the market doesn't bounce back within the time that we are expecting, eventually we exit the position in loss. Okay. So this is all about testing your patience. So what to do is to wait. Once you have decided to enter any trade at a specific price, make sure that you don't enter that trade unless and until the price reaches your level. Even if you miss that opportunity, then let it be. Miss that opportunity. Okay, market is there, open every day, it will open for you. If you miss one opportunity, there will be another opportunity coming here. But don't run behind the price. Okay, don't run behind the price. Okay, so don't enter unless and until there is an obvious reason to enter. Okay. Exit strategies. So now that you have
identified an opportunity, you have entered the trade, but you should also have a rule to exit. Say, for example, as I said, my entry price, which I was expecting was 350. My target is 370. Okay. But it doesn't mean that I should hold on to my position all the way to 370. Even if I exit at, let's say, 360, 65 or 67 or 68, that is also good enough. I have made 20-25 rupees, which in terms of percentage is, I guess, more than 5%, nearly 3 to 5%, which is good enough. Okay. So, see, my mother always tells me that खाना खाने के बाद है ना रात को dinner, okay, dinner के बाद में always leave some food for God. Okay, never empty everything. Okay, so in same manner we have to keep this practice that even technically or theoretically my target is 370. I should not wait for 370 to come. I should be happy to book my profits anywhere between 365 to 370. Make sure that you exit in profit. Okay, exiting your position in green should be your prime objective, not to make it till the exact entry that you want while exiting. Okay, but while entering you have to be specific. मेरे को entry 350 पे करने का है, then I will wait for it to come to 350. But if I am planning to exit at 370, I should leave that 2-3 rupees and exit at 365, 370, 367. Okay. So you should have an exit strategy also. And between your entry and exit, you should also have a rule to trail your stocks. See, once I had a discussion with one equity research analyst working with a multinational company, and I was discussing with him like what was happening with me during that phase was like I used to book my profits very early. Okay, and like say for example, I booked a profit of 4,000 and I kept looking back to my trade. And this one example, Seju also might remember, Adani Enterprises only. Okay, we had bought it at around 250 and it went to 320. Okay, on the same day. But I booked a profit only of 4,000 or 8,000 rupees, and later on I checked, I would have made 2 lakhs or more than 2 lakh rupees on that particular day in that same very trade. If it happens once, it is very easy to say. Okay, it is very easy to say that exit कर लिया ना तो पीछे मुड़ के देखने का नहीं. It is very easy to say, but what happens is that we keep on. It is our human nature to keep on checking what happened after we exited. May it be like we might have exited in profit or in loss, but we will keep on checking. Okay, मैंने profit book कर लिया, उसके बाद में किधर गया? Okay, this is human nature. It happens. It is very easy to say not to do it, but we have to follow this, not to look back what happened. उसके लिए मैं बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ. Say for example, you are traveling from location A to location B, okay, on a train, and that train is like your journey is starting from location A or station A, and last stop for the train is location B. Once you reach station B, what you do? You come out of the train, you leave that train. Okay. Do you stop on the platform to see where that train is going now? Is it going back to A or is it going to C or D? We don't. Okay, we leave that station, we leave that train, we leave that station, and we go whatever work we are there for. Okay. So similarly, once we have left that trade, once we have came out of that whatever positions we had, whether in profit or in loss, leave it. Let it go wherever it has to go. Okay. Don't recalculate. अरे मैं रुका होता तो और ज़्यादा profit होता. Because it affects your mind, and next time when you take a new trade, it will have that effect in your mind that last time I exited early and I missed my profits. So next time what happens? What happened with me in Vedanta? Okay, even if you are in front of the desk, you know that you have to exit, you will not exit because of that past memory of yours. Okay, that you missed the profit. So don't look back. Whatever trade position you have closed, make sure that you remove that script from your watch list. Make sure that
you remove that script from your watch list. Okay. And move ahead to the next opportunity, whatever you might have identified. Obviously, this is all, whatever I'm saying is very easy. क्या बोलते हैं ना? Easy said than done, है ना? But we have to, and how to do that is the important topic that I'm going to tell you later on. So what are the problems? As we already discussed, FOMO means fear of missing out. Okay. See, during the course also, Neeraj is here, Dr. Sheju is here. During the course also, if you remember, whatever strategies, whatever price action we learned, did we ever use during the course? Did we ever use 1 minute and 5 minutes charts? Healthy. We So, always referred bigger time frames like day time frames. Yes. Most of the things. yes. Day time Right. frames, week time frames, or even for that matter on smaller time frames, we used 4 hours or 2 hours, or for that matter 1 hour. Okay. But we never used 1 minute and 5 minutes time frames to learn anything. Okay, whatever Yes. patterns we learn. What happened with us and what happened with me, basically. Okay. As we grow, as we like spend more and more time with the markets, we tend to, because again, the reason is because our mind is very fast. No? We are expecting things to happen very fast. Okay. So that's why what we do, we try to use the same strategies in smaller time frames. And that is the first and the biggest mistake we do. We then completely ignore and we completely forget to look at the charts in the bigger time frames. Every day morning at 9:15, we will open the charts in 5 minutes and then we will jump down to 1 minute and we'll take the trade. And by trading, by using 1 minute and 5 minute time frames, we are expecting results like day time frame. It is not going to happen. You cannot travel on a bicycle from India to London. Come on. So if you want to travel from India to London, you have to take a plane only. And plane means I'm comparing the time frames with the vehicles. Okay, so bigger the time frame, bigger is your vehicle, and bigger time frame will take you longer distances. Bigger vehicles will take you longer distances. So make sure that you use and you stick to bigger time frames. Whenever you start doing analysis, make sure that if I don't know whether you noticed or not, Dr. Sheju and Neeraj, see, I have already highlighted. Okay, I have marked all these time frames as my favorites. Can you see this? Yes, sir. Starting from 1 minute and the biggest is 12 minutes. How to do that? Okay. Once you click on the drop down menu, okay, these are all the time frames which are provided by TradingView. There is a star mark next to it. Okay. Once you click on this star mark, okay, you can add all those time frames as into your favorite list. Okay. So it is readily available here. Whenever I come across any opportunity during the market hours or after the market hours also, whenever I'm doing the analysis, what I do earlier, I used to do these mistakes. See, whatever I have learned from my own mistakes. My course is full about what I have learned by doing mistakes. Okay. So I have done these mistakes consistently for a long period of time. And later on, I realized, no, this is not the right way. I should give time. I should start doing my analysis from the biggest time frame, whatever is available. So whenever I come across any like opportunity or whenever I try to find any opportunity, I will start from the biggest time frames. And as of now, the biggest time frame that I start is at least 3 months. Okay. So I look at the charts at 3 months, and now you will realize, okay, where did the price reversed from? Okay, I will remove all the drawings. Okay. Now we are looking at Vedanta only. And why did the price reverse from this level? $340.75. So if you go to day time frames or weekly time frame, you might not realize why price reversed from this particular level. We will not realize it. Okay. But when you go to 3 months time frame, okay, I will show you another example also. See, do you see this resistance here? So it touched this level of supply and it reversed.
So if you are looking at the chart on a smaller time frame, you would have missed this supply zone. And that is what happened with me. I was expecting the price to go further up to bridge the gap. Okay. But it did not happen. Okay. I will show you another example of REC Limited. Okay. Let me take you to the smaller time frame first. So this is on a daily chart. Okay. I have already marked this. So let me remove this. Remove the dots. Now look at this chart. You can even check the options data. Okay. In fact, I had covered REC also in one of my pre-market rules. I have covered REC. So if you are looking at the daily chart, you will find, okay, there is a resistance here. Okay. But it becomes very convincing when you go to 3 months time frame. Okay. Now you will find out that it is also in a supply zone on a quarterly time frame. See, can you see this? It is in a supply zone in a quarterly time frame. So the advantage of looking at a bigger picture, okay, always start doing your analysis from the biggest time frame. You will be very safe. Okay, you will be very safe and you will get biggest opportunities in the market. Okay. So let us come back to the discussion. Okay, so fear of missing out, what happens is that we tend to take or enter the trades very early. Why we do that? I have already discussed. We keep on waiting for the opportunities or price to drop or rise to our level, but it never happens. And eventually we end up entering the trade before the criteria, whatever rules we have defined for ourselves, even before the rules are fulfilled, we tend to enter the trade. Okay. So time frames, as I discussed, then we jump to this. This is how we build habits. Okay. This is how we build wrong habits. I'm talking. We jump onto smaller time frames. Okay. And then what happens? We also become like start doing over trading. एक trade में से निकला दूसरा ले, दूसरे से निकला तीसरा ले. Okay. A very recent example. One of my very ongoing student of ongoing batch, I taught. I covered straddle strategy. Okay. So once I covered straddle, what he did, he started applying straddle every day in Nifty Bank Nifty every day. Because he used to go, like he's working in the office now. So he said, what I do whenever there is nothing to do in office now, what I do, wherever the price is, I will apply straddle. As soon as I get 1,000 rupees profit, okay, total, I will exit. So like that, he started taking 4 or 5 trades every day. And he literally started making 4,000 or 5,000 every day by applying straddle. Okay. And once what happened, because he was traveling here, he was already in the trade. It was his bad luck anyways with that. He called to the broker, like his account is with Sher Khan, I guess, I'm not sure. So whatever broker he is with. So he called the call and trade facility and he asked the girl to exit the long position, that is exit the call option and hold on to the put option. And that girl by mistake exited the put option and kept the call option. So he was in profit of 6,000 and towards end of the day, he was in loss of 8,000. Okay. Because of that girl's mistake. Anyways, but that was not his mistake. What mistake he did is that because he kept on doing this, whenever he was free, he will apply straddle, book 1,000 rupees profit. Then again, whenever the price will reach to whatever, like any strike price, okay, he will apply straddle, make 1,000 rupees, and this is what he started doing. Later on, so this is basically over trading, okay. So what happens? What happened is that he then applied straddle, and he did not realize that it is more than 315. Okay, after 315. He applied straddle once again and he did not realize that the markets will close and it was Friday. Okay. And he did not realize and the markets closed because he was waiting for the profit to reach 1,000. No, that was his practice. As soon as the profit will reach 1,000, he used to exit. But in that particular trade, the profits did not reach
1,000 before the markets closed, and he kept both the positions open. No, what he did, he kept the call option open and he booked profit in put option. Market fall down, so he was in profit, whatever 500, 600 rupees profit in put option. He booked that profit because he thought the price will bounce back a little, then he will exit, book profit in call option also. But it was Friday, market closed, and on Monday, market opened gap down. Okay, so whatever profits he made had been washed out by that call option. So this was the mistake he did. What mistakes I used to do? Okay, when like about few years back, I had created one alert on TradingView. Okay, I created one alert. I wrote one program in the on TradingView platform. We have that script, Pine script. I wrote a program in it. I designed one alert, and I started getting alerts like initially, like as soon as the markets open, initially in first 5 to 10 minutes, I used to get, I don't know, like 40, 50 alerts within few minutes only. But I used to ignore those. After 15, 20 minutes, then whatever alert will come, I will check, I will scan, and then I will take that trade. Okay. So this was a very wrong practice, basically. Okay. Because then I used to take one trade, either I will like I used to book profit or loss, whatever, then I used to wait for the other alert, another, so next alert I will jump into that trade again. So it was a very wrong practice. What happens is that, see, our mind is very fragile, basically. Okay. And every time you put your mind into stress condition, over a period of time, it becomes like you are obviously subjected to mental fatigue. And once that happens, you tend to make mistakes quite often. So the best way to do is that you should have your targets for profits as well as for your losses. And also you should have a rule of, if you are doing intraday trading, I'm talking about it. If you are trying to do an intraday trading, you should also have some limit, specific limit, that how many trades you will take in a day. Say 2 trades or 3 trades, that is more than sufficient. Even if you are closing your day in loss, maybe once you have done 3 trades, even if all 3 trades are in loss, close your positions, shut your computer down, and don't look at the market, because you have reached your maximum trade limit. 3 trades in a day is more than sufficient. Later, now what I do, I take only 1 trade, max 2 trades. I take only 1 trade in a day. I reach my, like whenever I have reached my targets, I will book my profits even before the targets are achieved, and I close my, and in between I used to share my done for the day posts also. I stopped it because a lot of people started asking me 3 tips every day by looking at my done for the day posts. People started calling me to ask for tips, so I stopped it. Okay. Anyways, so stop and avoid over trading. Okay. And all this, like, there is nothing new. I know that whatever I'm saying right now is all we have already discussed in our course. There is nothing new. The new thing is coming. Wait for it. Okay. So revenge trading is what we do. Loss हो गया ना, अभी cover करने का ही. मेरे को 2000 लॉस हो गया, I will find another opportunity so that I will recover my loss. Okay, so that is what a habit, we end up developing this habit of revenge trading also. And obviously, as I said, looking back after exiting, we keep on looking back to the same trade again and again. Where did the price go after I exit? Okay, so we have to avoid all these bad habits. Okay, and the most, even like not only for derivative segment, but also for delivery based. Okay, whenever we invest our money, expecting that script to go up, the price to go up, and what happens, and this is like something new that I'm going to discuss here about this particular topic. What happens is that, see, like I have a friend. His academics were like, till SSC, he was very good student. Okay, till SSC, he was very good student. Like
above 80% is what he used to get. Okay. And he had all the plans to go for engineering, but what he planned is he will go like after he will complete his 12th science and then he will go for engineering. But when he got admission, like when he joined the college in science stream, his results started like his results were like very ordinary. Like he never even managed to get first class. Okay. So he got about like 55%, 58%. So in science also 12th standard also he got very few marks, very less marks. So his parents were also worried, right? This my son was so bright. He used to score 80 plus till SSC. And what happened to him all of a sudden? Okay. And after completing 12th, instead of going for engineering because he scored very low, he joined diploma. So after 12th, he joined diploma. But because he always wanted to go for engineering, when he joined diploma, right from the first year, he scored distinction every year. So after diploma, then he went for degree. Okay. What happens is that, see, even if we consider for ourselves, no, my average was in my school years, my average was like 60, 65, 70. Okay. So I'm already like every time I appear for any examination, I will expect, and because that has become normal for me to score 70%, 65%, it is normal for me. When I went to engineering, my percentage dropped like 50%, 52%. Okay. So initially, what happened? I was shocked. Initially, I was shocked. What happened during pandemic? When everything was stopped, everyone went into shock. अरे घर से बाहर ही नहीं निकलने का, मास्क लगा के घूमने का. After 2 months, what happened? Using masks, staying at home, using sanitizer, we got used to it. Okay, and that become a new normal for us. Okay. It is human tendency, human mind that we become used to situations. So while like why I was discussing about marks that I used to score. After first semester, in first semester I got 52%. I was shocked. In second semester, I scored 53%. My shock was little, like that shock effect was gone. Then I become used to that 50% average. Okay. And that become my new norm. So when we invest our money in some stock, what happens? Say for example, you bought some stock at the price of 2,400. Okay. And you are expecting it to go to 2,700 or 800 or 3,000 over a period of time. This is what your analysis is telling, that it will reach 3,000 in 2 months or 3 months. So you bought it at 2,400 and you are expecting the price to go up, but the price drops. Okay. So after 1 week, it is reflecting a loss of say 5,000 rupees. Okay. So for next 1 month, that loss will be around 5,000 rupees only. Now that loss of 5,000 becomes new normal for you. Okay. So even if you, like, while entering that trade, you had decided, I will exit this position if my loss exceeds 5,000 rupees. You had decided at the time of entering that trade. Okay. But because the loss is lingering around 5,000 for more than a month, it has become your new normal. After a week, that loss increases to 8,000 and 9,000. Okay. But you are already used now. 5,000 to already tha hi, 2-3,000 to badi gaya. Okay. So you never exit that position. And you keep on holding that position. So every time the price, like after 9,000, then after a month, your loss is 12,000, 15,000, but you still keep on holding that position because you automatically your mind start getting used to the new lows. Okay. So you have to think like a machine. This is the only advantage that what they are doing, that robots are being used. What it is called? AI. Algo trading. Yeah. Okay. So this is the only advantage of algo trading, that it takes out the emotional part completely. So we have to think like a computer, and if we have decided to exit that position after it has
reached a certain level of price, you have to exit come what may. Okay. Otherwise, you keep on holding that position and ऐसे बहुत सारे मैंने देखे हैं positions लोगों के. Some scripts like they have bought at the price of 400 and 600 and now it is trading at 13 rupees and 11 rupees. But still they are holding. Why they are holding? They had entered at the price level of 400. So, अगर 350 का भी stop loss लगाया होता तो वहां पर निकल गए होते ना. Now it is trading at 13 rupees. But still they are holding. Now what they do? अभी क्या निकल के करेगा? 13 रुपए लेके क्या करेगा? पड़े रहने. Okay. So never let this happen to you. Whenever your price level is reached, gather that courage. And if you are not able to gather that courage to book your loss, because see what happens, लोगों का एक और नजरिया क्या होता है, लॉस तो तब दिखेगा ना जब मैं बुक करूंगा. तो मेरे I don't want to see loss in my portfolio. Loss will be there only when I book the loss. So I will hold on. I will not book the loss. This is also some people's mentality. So book your loss. Make it a habit that to exit your positions whenever is specific price level, whatever your while entering whatever price level you might have identified that if the price falls below that level, you have to exit. Make it a habit to book your loss at that. And it will take only few attempts, okay, to gather that courage. अगर नहीं हो रहा है तो आप मुझे फोन करो, मैं आपको कुछ तो भाषण दूंगा और निकलवाऊंगा. But feel free to call me. I will make sure that you exit that position. Okay, don't hold on to your loss-making positions. So these are the habits that we generate over a period of time. And once whatever habits see, एक बार आदत लग गई ना, so it becomes very difficult to like keep that or make your erase that habits. Okay. So it is very difficult. So that's why it is very important to make new habits. Okay. So how to do? What are the remedies? एकदम घिसा पिटा आंसर. Discipline से काम करो, focus करो. Okay. It is very easy to say. I know. Okay. Second, yes, this is very important. What happens with the new breed of traders that have come into the market during pandemic? पैंडेमिक में ही ज्यादा लोग आए ना मार्केट की तरफ, फिर लोगों ने सीखने की कोशिश की, यूट्यूब से सीखने की कोशिश की, व्हाटएवर. दे लर्न सम न्यू स्ट्रेटजीज. मैंने भी तो बहुत सारी स्ट्रेटजीज सीखा है ना. सो व्हाट हैपन, पीपल दे वांट द रिजल्ट्स वेरी फास्ट. ओके, सो व्हाट दे विल डू, दे विल लर्न सम न्यू स्ट्रेटजी and they will apply it on paper trading. They will apply it once, they will apply it 2 or 3 times, and they will conclude that yes, this strategy works fine. Or on the other side, that strategy might not work for them. Okay. Either it will work or either it will not work. But what is important is that they will come to the conclusion only after testing that strategy for 2 or 3 times only. It is the very wrong thing to do. Whatever strategy you are working on, it takes at least 2 years to be sure whether that strategy is successful or not. You cannot come to conclusion only after 2-3 trades. Okay, so till as of now, whatever strategy you are working on, if it is working for you, stick to it. Don't try something new. If you want to try, if you learn something new, if you want to try it, okay, if it is possible, do the back testing for at least 2 years on different scripts, not on only one script. Okay. If it is possible, or else try that strategy on paper trading for more than 200 trades at least more than 200 trades during live markets, or rather in the markets to come. Okay, after 200 trades, then you come to conclusion whether that strategy is right, working for you or not. If it is working for you, then you can apply it in real market. If not, then ignore it. Okay, so don't come to conclusion very soon about any strategy. Okay, test it rigorously, and then come to conclusion. Okay.
बट मेरे साथ में भी ऐसा होता है काफी बार है ना, वॉट एवर, खास करके ऑप्शंस में, वॉट एवर स्ट्रेटेजीज वी अप्लाई ऑन पेपर ट्रेडिंग, ओनली बाय अप्लाइंग इट फॉर 2-3 times I come to conclusion, अरे यार, this strategy is very good. And when I try to apply that strategy, for example, Dr. Shelby, calendar spread in futures. Okay, what happens? You can share your experience. What happens when you apply that strategy in real market? नहीं, it does not work always. मतलब when we are expecting, मतलब उसमें दिखाता है कि probability of loss is 0 and your expected profit is some XYZ percentage whatever, but then you apply it and then you come to know that it is working in the opposite way. मतलब वो जिधर ऊपर जाना चाहिए वो नीचे, जो नीचे जाना चाहिए वो ऊपर चला जाता है, and ultimately you see that your position is in loss. So I have had that experience also, as in it has been lost. So लेकिन but I still held on to it, and then after some time, as in वो थोड़ा बहुत profit में जाता है. So but then you need to know, judge कि अच्छा ठीक है अभी मतलब इधर से निकल जाना. But then it is like a little bit of a like gamble only, as in whether it might go down, it might go up, as in your total value which is there. I will tell you what happens. First thing, how do you select the script for applying calendar spread? कैसे select करते हो आप? I just go through all the scripts which are there and then see the futures price and the current, as in different future price में कैसा आ रहा है, मतलब this month and the next month future में कितना difference है, वो देख के as in I select. So first, what you do, see, once we identified the script, okay, we have to identify the script in which there is maximum difference in terms of percentage between the two future contracts. Okay? Yes. What is the maximum difference? Whatever script, what is the maximum profit probability? You try that, apply that on paper, or simply, whatever the difference, multiply it by the lot size. Okay, that is your maximum profit, right? If that maximum profit is more than 15,000 rupees on an average, I'm saying like 12 to 15,000 rupees, only then it is a good trade opportunity. If your maximum profit is around 4,000, 5,000 rupees, now don't take that trade. Because even if like you have entered the trade and even if like it is reflecting profit in your account, say 2,000 rupees or 3,000 rupees profit, when you attempt to close, eventually you will close it in loss only. Yes, Okay. yes, that because as in when you close it like say market value पे हम उस पे close करने के लिए जाते हैं ना, तो वो price मिलता नहीं है. Exactly. It becomes goes in loss. So, yeah. So only if your maximum profit is around 12 to 15,000 rupees, and only take that trade. Once your profit, the real time profit is, let's say 8,000, 9,000, 10,000. At that time, if you exit at market, now you will at least get 5,000 rupees. Okay, but starting में ही अगर आपने ऐसा स्क्रिप्ट ढूंढा जिसमें maximum profit is 5,000, you will not be able to take that profit. Okay, so because सामने वाली भी smart है ना, वो ऐसे कैसा पैसा देंगे. Okay, so they will not let you take that money so easily. Okay, so wait for the opportunities. When you get theoretically more than 10,000 at least profit, only then apply that. Okay, no, don't apply it for the theoretical profit of 4,000-5,000. So testing is very important before applying any strategy in real market, and test it rigorously and in different market conditions. Okay, so whichever strategy gives you consistent profits in different market conditions, different scripts, different sectors. Okay, yes, you want to say something, doctor? Yeah, also it does not say, for example, I was doing something, so the profit that I had seen was around like 12, I guess 13 or 14,000 के range में कुछ तो था. But then the theoretical profit which was shown was much higher, as in it was approximately in the range of around 30,000. So I was waiting for it to go up, but then लेकिन वो फिर ऊपर का गया नहीं, उधर से फिर नीचे करके आते गया. तो as in how do we come to know when to exit? As in, say theoretical profit is showing 30, but then इधर अपने पास around maximum profit in calendar spread, specifically in futures contracts I'm talking. Maximum profit when will you get? If both the prices become equal.
So practically it is not never going to happen. So if your maximum profit is 100 rupees, you should be happy to book 30 rupees also. Okay. So that's why I said that take the trade only when your maximum profit theoretical is at least more than 10,000, so that you will be able to take 2-3,000 at least from. Okay, never expect entire maximum profit to achieve. And now this one is very important. Everybody wants to become angry young man. As soon as they learn any strategy, as soon as they complete the course from me or from anywhere else, everybody wants to become Amitabh. Nobody wants to become Sonu Sood. Okay. बनेगा तो अमिताभ ही बनेगा, मेरे को साइड एक्टर बनने का ही नहीं. अरे भाई सोनू सूद बनेंगे तो भी आप छा जाओगे यार. Okay. Everybody wants to be an aggressive trader. Okay. Nobody wants to be a defensive trader. Okay. Everybody wants to become Sachin. Nobody wants to become Rahul Dravid or US Lakshmi. I have learned, I have seen, in fact, my first step when I entered the markets, it was like, I was very blank about the markets. I did not know anything about the markets. And there was one friend I made, coincidentally, I met that person who is very younger than me. He was into trading and I met him. And obviously my wife was already practicing, but I never was interested in trading then. And I met that friend of mine after long time. And he told me how he does, like how he practices, how he trades and all those things. And the way of his like speaking and all, I got attracted. Then I learned with my wife and all those things happened. But see, whatever technical analysis, my first lessons I learned from him. Okay, whatever he taught me then about candlestick patterns and all, basic things, basically like what is green candle, open, high, low, close, and all those things. Okay, so you can say that he was my first guru to teach markets. But today, when I look back, I will not take his name, but today when I look back, because of his very aggressive nature, not very, in fact, that word very is also very small in front of his approach, the kind of approach he has. Aggressiveness is like, whenever he will come across any opportunity, he will say, "Arey, क्या बोलते हैं उसको? Holy grail ही मिल गया उसको जैसे." He will put in entire, he will take his maximum risk in every trade that he comes across. So he will eventually like say, if I'm looking at him for a period of 6 months, in first 4 to 5 months, he will make big money with his aggressive approach. But after 6th month, he's again where he was, flat. Okay, zero. Okay. So this is not the right thing to do. You should have some money management, risk management. Yeah, we have covered it now. Why to become so aggressive? You should calculate your risk. ऐसा नहीं कि यार मेरे को मिल गया वेदांता जाने वाला है 350, तो मेरे जिंदगी का सारा पैसा मैं वेदांता में लगा देगा. This is wrong now. If that one trades, whatever profits he used to make for, let's say 30-40 trades over a period of 6 months, he will lose entire that profit in 2 or 3 trades only. Like Sheju also shared no, before we started. Okay. He said that whatever profits he made, he lost it in 1 or 2 trades only in Dr. Lal. Okay. So that is a very aggressive way of trading. Okay. थोड़ा सा डिफेंसिव होना जरूरी है, और डिफेंसिव थोड़ा सा नहीं. If you become defensive, only then you will sustain in markets. Otherwise, these institutions will take out everything from you. You have to be defensive. Don't try to become hero. Become a side actor. Okay, you will keep on getting roles. If not in movies, then in some serials. Okay, you will keep on getting roles. Okay, don't try to become the lead actor. Okay. So defensive approach is very important. Emotional attachment, है ना? क्या होता है? Like when we ask ना, क्या किया? क्या position है तेरा? Right? People ask me, what is your position today? What have you taken any trade? Then I'll say, yes, I have shorted LIC housing. Say for example, okay, I have shorted LIC housing. Then what is your target? What price you have entered? I have entered at 420. Okay. And what is your target? My target is 400.
I wish it will come down to 400. I wish, I am expecting. So whenever you use these words, okay, I wish, I want, okay, it is telling you that you are on the wrong track. Whenever these words come from your mouth, that you are wishing for the price to go in your direction, it means you are emotionally attached with your position. And you will not be able to exit it when the time comes. Okay. So this is not the right way. You have taken the trade. If like your mindset should be such that once you have entered the trade, you have placed a stop loss, you have placed a target. Okay. And I don't have any emotions. Either it will take my stop loss or it will take my target. Finish. Or in between, I will make a decision whether to exit early. That decision I will make. And once the price has started moving in your direction, you keep on trailing. At least bring your stop loss to break even. है ना? मैंने 400 पे सेल किया था. ओके, मेरा स्टॉप लॉस कितना था? 403 का, 3 रुपए का, 2000 का लॉट है. LIC हाउसिंग फाइनेंस का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ इसके लिए. So if the lot size is 2000, I have placed a stop loss of, let's say, 423. Okay, once the price has started moving in my direction, I will change my stop loss and move it from 403 to 400 or 400 rupees 50 paise. So that even if the price reverses from there, and even if it triggers my stop loss of 400 rupees 50 paise, I will still be in, like, at least I will recover for my brokerage charges. So after that, my fear factor is gone. Okay, my target was 400, but when it might have reached, let's say 410 only, after making it to 50% of my target, then I will check my options data and everything, and I will take a decision. Okay, 10 रुपया मूवमेंट में मेरे को 20,000 रुपया मिल गया, more than sufficient. Okay. So that should be the approach. Okay, never get emotionally attached to your trades. Otherwise, what will happen? मैंने बोला ना कि loss book ही नहीं करते फिर हम लोग, ना, because we are very emotional. We never will book loss, and we'll keep on holding our loss making positions. Okay. So ये words कभी नहीं आने देने का. Whenever these words come in your mind, ना, I wish, I'm expecting, I want this price, ना, wishing and all those things, that should not have any part, okay, in your trading. And this one, I said na, the mistakes that I used to do. I created alerts, and like I was so overconfident ना, वो नवाजुद्दीन आ गया था मेरे अंदर. Okay. मैं ही भगवान ऐसा लगने लग गया था. So I was so overconfident na, that I stopped doing my research. And what I used to do after the markets open, okay, I even stopped looking at pre-markets. Huh? After the markets opened at 9:15, whatever alerts I have created, what I will do, whatever alert I get, I will trade into that. I will take a trade in that stream without any research. And while doing so, what I used to do, I used to stick with 1 minute and 5 minutes time frames, because it was a habit to take an intraday trade by using 1 minute and 5 minute time frames. But what is happening in a daily time frame, weekly time frame, monthly time frame, that I never used to check. Okay. And then eventually I used to book my losses. Okay. I used to come out in losses only because I was so very indisciplined. Okay. So now I have learned from my mistakes. So instead of taking impromptu trades after the markets have opened, you spend at least, say, it will not take more time, 15-20 minutes max 30 minutes. Okay. Once you have learned all these screeners how to use, we have already covered the screeners, right? So you can screen the markets on the day before. If I don't have any position open, what I'll do, I will spend 30 minutes doing my research. I'll find out the opportunity. I will find out 3-4 different opportunities, because obviously only if I find only one opportunity and the price doesn't come to my level where I want to enter, then I will waste that day. Okay. And even wasting that day is also not wrong. Huh? Even like if you don't take any trade for 3-4 days, doesn't matter, because you are following your rule that you will enter the trade only and only if your criteria are matched. So till the time you just keep waiting for the price to come to your level.
Don't enter before the price is touched your level. Let the opportunity go by. No need to worry. There will be another opportunity. Okay. So what I do now, and fortunately, because I started making that pre-market roar videos, okay, I'm sure Dr. Shailu is and also Neeraj is also following it. Okay. So because I started making that videos, I started doing my research because I want to cover at least one script now in the next day's pre-market roar. Okay. So I started doing my research, and while doing so, what happened? I started coming across the opportunities. So I don't have to do my research after the market has opened. I know what am I going to do next day whenever the market's open. Okay, I know. So do your research well in advance and then wait for the price to reach to your levels and then enter the trade. Stop taking impromptu trades. Market खुलने के बाद कोई न्यूज आया है ना अचानक से, पहले तो न्यूज चैनल बंद कर दो. डोंट लिसन टू एनी न्यूज. ओके, बंद कर दो सारे जितने भी न्यूज चैनल है. वो मनी कंट्रोल ऐप भी उड़ा दो आपके मोबाइल से. किसी चीज की जरूरत नहीं. ओके, यू identify the opportunities well in advance, wait for the price to reach and enter the trade. Don't take any impromptu trades. अभी ये सारा जितना भी मैं भाषण दे रहा हूं, okay, it is as again I will say it is easier said than done. But I want you to, and I want you all to make this happen. And for that you will have to make all these things. You will have to make these your habits. आदत डालो आप अपने आप को. We have to make these our habits that you will follow these rules. How to do that I'm going to disclose in a few minutes. दूसरा, जैसे आई शेयर्ड दैट फ्रेंड्स स्टोरी ना, एक प्रॉफिट हुआ, दूसरे ट्रेड में मैंने पोजीशन साइज इंक्रीज कर दी. ओके, once I made one little profit, next trade I will increase my position. In third trade I will increase my position further. So I keep on increasing my risk with every small little profit I make. So that is also a wrong thing to do. You should have a rule that you will not increase your risk unless and until you will double your principal at least. Say for example, as Dr. Seju said, that he started with XYZ amount. Okay. So let's say for example, I started with amount of 1 lakh rupees. And as per whatever risk management rules that we have learned, I will not increase, like I will start trading with the risk management rules that we have learned. And I will not increase my risk unless and until I double that funds at least. Say for example, in cricket also, you will see that batsmen usually will start taking higher risk shots only after they complete 100 ना. सेंचुरी के बाद में फिर बल्ला घुमाना चालू. तो सेंचुरी हमारे में सेंचुरी कब होगी? Once you double your funds. If you are starting with 1 lakh, if you generate 1 lakh rupees profit, that is the time you say that you have completed your century. And after that, you can increase your risk. Say from 1% to 1.5% or 2%. Never double it. Never double your risk. 1% का risk ले रहे तो तुरंत 2% मत करो. 1.5% करो. Okay, because now 1.5% is of 2 lakh. Na? Okay. So increase your risk a little bit after you complete your century. अभी ये सारी चीजें अचीव करनी है. फिर से है ना, बोलना आसान है, करना मुश्किल है. तो हाउ टू मेक दिस योर हैबिट्स, हाउ टू डू दैट, हाउ टू मेक योर सेल्फ ए सक्सेसफुल ट्रेडर, जो आज का टॉपिक है. तो उसके लिए गुरु मंत्र है एनविजन. ओके, जिसको हम लोग विजुअलाइजेशन भी बोल सकते हैं ना, विजुअलाइजेशन. ओके, एंड इट नाउ गोज इनटू सम philosophical, psychological things. Okay, we have to start developing all these practices, whatever we learn. We have to make these our habits. So developing habits, how to develop habits of, obviously Dr. Seju, you might have some idea about it. Habits कैसे develop होते हैं? Repetition. And if I want to make, or say for example, है ना, I was very lazy. Okay, and everybody like started telling me that अरे क्योंकि मेरा काम दिन भर बैठ के ही है ना, ट्रेडिंग करने के टाइम पे भी बैठा ही रहता हूँ, सिखाने के टाइम पे भी बैठा ही रहता हूँ. So I started gaining weight
Okay, वजन बढ़ता गया मेरा. So people were telling me, अरे तू थोड़ा 1 घंटा तो निकाल walking कर यार. But I was very lazy. I never used to do it. It was very difficult for me to wake up early and go for a walk of or like even for 1 hour. But once I started, okay, so now it's like more than a year I've been walking regularly. Okay. Even the other example was pre-market pro videos. Okay, I started it many times, but I never continued it. Okay, many times like in past, I have started it, but I failed. Okay, I never used to continue doing it. Okay, I used to stop it in between after 2-3 videos only. But for past about 4-5 months, I have been doing it regularly. Okay, so what is the rule? It is said that if you continue doing one thing regularly for 21 days, it becomes your habit. And after that, it becomes effortless to you. It comes to you automatically, naturally. Okay, it becomes your habit. Okay. But for some people, it might be 21 days. For some people, it might take more than 21 days. Okay. For some people, it might even take 200 days. It depends on, varies from person to person. So you have to keep on doing the things consistently. Initially, it will take some efforts for you to stop doing the wrong things that we have been doing. Okay, not doing the wrong thing is also an achievement. Okay, whatever ways of trading we are practicing, okay, we have to stop doing that. So first step is that. So after that, whatever new habits we are going to follow, it will take some time. Keep on doing it consistently for at least 21 days, and then it will become your habit. So keep on doing the things consistently. And once, let's say, for example, it is my first day. First day out of 21 days. Okay, let me take an example of 21 days that I am trying to practice something and I want to make that my habit. So after completing it for the first day, you should give some incentive to yourself. Like you should give some reward to yourself. For example, walking. Okay, if I have decided to start walking from tomorrow, if tomorrow is my first day, once I do it, okay, after coming back from walking, I will reward something. I will give some reward to myself. Okay, do something. Have a cup of tea. Okay, have some coffee or a chocolate and celebrate your success. That yes, I have done what I decided. Make your mind think that you have achieved something good, and let your mind think that you have achieved something good. Make it a like habit for your mind also. Okay, that every time you achieve something, you get this reward. So your mind will also keep on, like it will start attracting you to do it again and again. Okay, so keep rewarding yourself. So I already discussed about 21 days rule. Okay, so all the things that we learned, like what to do and what not to do, we have to follow these for 21 days. Okay. Now this is very interesting. Cognitive and neural mechanism. What is it? Anyone can want to share? What is cognitive and neural mechanism? Dr. Shaiju or Neeraj? Or Sitra sir, any idea? What is No, cognitive and neural mechanism? Any idea? No. See, it is basically अपने दिमाग के अंदर जो भी wiring है ना. So what happens is whatever we start doing now, if we keep on doing it, okay, वो wiring का ना आदत हो जाता. If we keep doing some certain things regularly, so it becomes a habit. Our mind registers it. Okay, that this is what I do regularly, and after a period of time, there is nothing new in it. We become habitual to that, and that wiring system, or that system, that programming that happens, it is called cognitive and neural mechanism. Okay, so it is not only for human beings, it is there for all the living beings. Okay, so it is a mechanism that works in our brain. Okay, our thinking, whatever we think, whatever
whatever we remember, whatever practice we habits we develop, it is because of cognitive and neural mechanism that we develop our habits. So there are two types of memories, okay, that work. Okay. One is episodic memory and one is procedural. यहाँ पर थोड़ा सा spelling mistake हो गया. Procedural memory. Okay. So what is episodic memory and what is procedural memory? So episodic memory, इसके ऊपर हमको सीखने का है. Episodic memory कैसे काम करता है? How does this work? And by learning how episodic memory works, we have to work on procedural memory. Okay. What is episodic memory? Is like we remember things. Say, for example, there was any special event or special occasion. Okay. Say, for example, you proposed someone in your college days, okay, and you are waiting for the result. Okay, and after a week's time, you got a message. Okay, or सामने से हाँ yes affirmative reply आया. Okay, so it is a memory, right? You proposed a girl and she replied yes to you. If I ask you any similar type of memory, any good thing that might have happened with you, the happiest moment of your life, if I ask you how did that happen, you will not only tell me each and every word or each and every moment, you will realize that you remember the date, what you did on that day morning, what you ate for breakfast, what color clothes, not color, but which specifically, what were you wearing, okay, where you were, you will be remember, like you will remember the location also. कि मैं यहाँ पर बैठा था, I was talking with my friend, okay, वो कौन सा दोस्त था, and what was the topic you were discussing. Okay, you will remember each and everything whenever you experienced that happiest moment of your life. Same things happen with the saddest moment also, but I am discussing only about happiest moments. Whenever such, like you come across such experience, you tend to remember each and everything. You remember it, that particular day or that particular moment you remember as in like similar to any episode, है ना, सीरियल का जैसे एपिसोड देखते हैं ना हम लोग, वैसा पूरा एपिसोड हमको याद आता है कि मैंने ये बोला, फिर सामने वाले ने ये बोला, हाँ, फिर मेरा फोन का रिंग बजा, देखा तो घड़ी में 2 बज रहा था. Everything we remember, that is pictorial memory that we have. Okay, so this type of memory is called episodic memory, and procedural memory is completely reverse of episodic memory. Okay, so now let's say Dr. Shaiju has a very important appointment with some senior doctor. Okay, where he is expecting some good things to happen with him, like he's expecting some good results out of that meeting. Okay, so he's planning, like he's planning some presentation maybe. Okay, so whenever he's planning that presentation, he might have prepared that PPT or whatever, but again and again, because it is so very important for him, that meeting, like his mind is continuously thinking about what I will say, how will I greet him when I meet him first, like will I say hello doctor, or will I just say hi doctor, or will I say good morning. Okay, and then what will be my first word, how will I start the conversation, like my presentation, which example I will use. Okay, all these things he will start visualizing. Okay, and when it comes to actual presentation, he might either follow what he has already visualized, or depending upon the situation, he might follow some other thing. He might end up doing something else completely different of what he might have thought. Okay, so these two examples of episodic memory and the procedural memory. Okay, अभी देखो, इसको है ना, मैंने उसको नाम दिया उल्टा पुल्टा. आई कॉल इट उल्टा पुल्टा, है ना. इस तरीके से देखो, इस तरीके से देखो. सो उल्टा पुल्टा क्या है, उलट पलट क्या है कि
let me give you a very simple example. मान लो एक एल्यूमिनियम का या आयन का पट्टी है, ओके, एल्यूमिनियम का पट्टी है, आयन का पट्टी है, उसके ऊपर व्हेन वी कीप सम लोड ऑन इट, व्हाट हैपेंस, इट बेंड्स ना, बेंड हो जाता है, बेंड हो जाएगा. सो व्हेन इट बेंड्स, नाउ व्हाट विल आई हैव टू डू टू make it come back to its original shape, like flat? Will it be sufficient if I just bend it in a reverse direction and just make it flat and leave? Will it become flat again? I will have to bend it on the opposite direction a little bit and then leave. Then it might come to its original shape, right? है ना, समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ? So similarly, we will have to do some things in reverse. Okay. अभी let's go back to episodic memory. कुछ तो बहुत अच्छी चीज मेरे साथ में हुई. I experienced happiest moment of my life, and because I experienced that moment, I remember each and everything happened before that news come to me and after that news come to me. I remember each and everything. What was I wearing? What was the time? Whom I was talking to? What I was talking? What words I was saying? Right? Everything I remember. I can, if I can remember each and everything that happened, I want to take this uska ulta. What if I visualize each and everything that I want to happen? Okay. What if I visualize each and everything that I want to happen with me? If I want to create this as my habit, if I want to become habitual of something, but I am not able to do it because of some, maybe there might be all different reasons. Okay, but I desperately want to make a habit of doing something. Then before doing it, if I start visualizing it, say for example, going for a walk, let's come back to the original example of going for a walk. I was so hesitant. Okay, मैं क्या बोलता था, there were lot of reasons. मैं क्या बोलता था, अरे यार 9 बजे तो मार्केट ओपन होता है, उसके पहले एनालिसिस करने का है, नहाने का है, ब्रेकफास्ट करने का है, मेरे पास टाइम ही नहीं है. Okay, so I used to give lot of reasons to myself. But once I decided that no, I want to go, I started visualizing it, that I will wake up in the morning at 6, come what may, I will wake up at 6, I will brush, I will have a cup of tea, I will do all the proceedings, and then I will start walking at 6:15. Within 15 minutes, I will start walking. I will be there in the garden. So it took me about 5 days, or you can say a week, to keep on visualizing it, that I'm doing it regularly. Okay. And on 7th day, I was there in the ground. I was walking. Okay. And after that, I kept on visualizing. Audio, you're on mute. Okay. There is some technical issue with Zoom. Even though I'm logged in, it is telling me that I'm logged out. And now it got really logged out for a second. Anyways, so I have to start visualizing. So when it comes to trading, okay, what I have to visualize and how to practice it. Okay. So we have to exercise this visualization to make it our habit of taking the right trade decisions. Okay. And to avoid ourselves of becoming a victim of FOMO, fear of missing out, and all those wrong habits that we discussed about. Okay, we have to make away all those habits, and we have to start new habits. Okay, all the right things that we discussed. So what to do? You write down each and everything. Okay, you write down each and everything, that what type of trade. Say for example, let me take one example. Let's take Kolpal, okay, for example. So now Kolpal has broken a prominent
level of support. Okay, Kolpal has broken a prominent level of support. And now, as per my analysis, I want to enter a short trade in Kolpal. Okay, I want to enter a short trade. And this is not a recommendation. This is only an example. Okay. So as per technical analysis or as per the rules that we have learned, let's say, for example, I want to enter at 1460. Okay, I want to enter at 1460, but the price is already at 1446. Okay. Now, similarly, I will identify 3-4 different opportunities. Okay, one will be Kolpal. There will be 3-4 different opportunities. Okay, Kolpal, maybe say Hindustan Unilever. I'm intentionally not taking name of Adani. Okay, so I'm trying to avoid. So one, let's say, one will be Kolpal, one will be Reliance, one will be Hindustan Unilever, one will be, let's say, NTPC. Okay. Okay, let's say NTPC. So what I will do now, I want to practice. First thing is that I have decided not to enter a trade unless and until my price has reached. But till now, what I used to do, after opening the chart, I felt like I might miss the opportunity, and I would, instead of waiting for the price to make it to 1460, I would have entered at 1450 only. Okay. But now I have to change that habit. So I have to visualize myself waiting. Okay, I have to visualize myself waiting for the price to come. Okay, and then I have to visualize that I entered the trade only and only when the price reached 1460. Whether that price will reach 1460 or not, only time will take. But because I have decided to enter the trade only and only at 1460, I will visualize that I will enter the trade only when the price reaches there. Okay. So you have to write down each and every step that you take to enter the trade. Okay. You will have to write down, because writing is the first step of execution. If you only keep on thinking, okay, अपना क्या बोलते हो, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और है ना, सो रैंडम एक्सेस मेमोरी में लिख के कुछ फर्क नहीं पड़ता, वी टेंड टू ओवरलुक इट. Okay, but if you write it down, it makes it way through till your subconscious. Okay, so don't only think, make it a point that you use some notebook and write it down. Okay, that I will take the trade only and only if the price reaches to my level, or else I will not take the trade. Even if I miss the opportunity, let it be. Okay? And then visualize it and write. Okay. Next, day by day, make it into, like, imagine or visualize like a director of any movie. Okay, किसी मूवी का डायरेक्टर कितना बारीक चीजें विजुअलाइज करता होगा, है ना. Each and everything we have to, like, go into as much detail as possible. Say for example, मैं अगर visualize कर रहा हूँ, if I am visualizing, let's say I am making a coffee. Okay, I am making coffee for my wife. Okay, if I am visualizing that, तो मैं सिर्फ उतना visualize नहीं करूंगा कि मैंने कॉफी बनाया और लाके वाइफ को दे दिया, नहीं. I will visualize that I will rise up from my chair. How many steps I will take to reach to the kitchen? I will pull the trolley. I will take out that whatever burtan I want to. I will pour some water. I will turn on the gas. I will wait for the water to boil. So each and every detail, minute detail, I have to visualize. Every minute detail I have to visualize. Okay. And then, so I have to, day by day, I have to make it as very specific and detailed as possible, and make it a movie, like create a movie of it. Okay. That I will enter the trade, I will wait for the price to come. Okay. And then task bracketing. Task bracketing means assign that task. So as far as trading is concerned, once you have visualized the entry, it is not only about entering the trade. Now you have to complete the process. Okay.
So you have to exit also. So don't only restrict yourself on visualizing the entry, but also the exit. Okay. So the next stage will be visualize the in position phase, that you have already entered the trade. Let's say you have entered a long trade and you have bought some script at the price of 500 and your target is 520. So from 500 to 520, the price might go up 3-4 times, might come down. Okay. So visualize that also, that what are you doing, what is going on, try to experience it, experience what will happen when the price is going up and down, what will be your state of mind. And then once the price has reached very close to your target of 520, then visualize that you book your profit at 518 only. Your target was 520, but you book your profit at 518 only. So you have to visualize each and everything in as much specific detail as possible. Okay. And finally, what will you do after you book your profits? You have to give rewards to yourself. No? So visualize having a cup of tea after winning the trade. And once you do it regularly, as I said, it might take 21 days for some, it might take more than 21 days. It might take few months also for some people. But once you keep this practice of visualizing, then automatically it will become your habit. Over a period of time, it will become your habit and you will do away with all the wrong habits that you have made. Automatically, all the wrong habits of trading will go away and you will stick to this new, and you start trading as per the rules that you have made, whatever rules we have learned in the course. Then you will start following those rules automatically. And this is the key of become successful trader. This is really like master key, you can say. And that's why I said master stroke. Okay. So this is the master key of developing good habits. And it is not only for trading. You can practice this for any other things in your life also. Okay. You can practice this for any other things, whatever new habits you want to develop, you can try that. So if you want to try it on, before trying it in trading, if you want to try this on any other thing, you start doing it from tomorrow also. And it is not required कि मेरे को आंखें बंद करके वो ध्यान मुद्रा वगैरह करने का है ना, not necessary. I can visualize with my open eyes also. I can visualize while I'm walking also. Okay. In fact, I am now, मैं तो अभी बात करते करते भी visualization चालू रहता है. Even if I'm talking to someone, my mind is visualizing my trade. Okay. So for example, if I'm expecting Vedanta to go up, दो रीजन है. पहला तो डिविडेंड दे रहा, अच्छा खासा डिविडेंड, 12.5 रुपए का डिविडेंड दे रहा वेदांत. सो डिविडेंड के पहले स्टॉक उड़ता ही है. सो आई कैन विजुअलाइज, लाइक वंस आई गो थ्रू माय एनालिसिस कि भाई ये प्राइस पे मैं बाय करूंगा, आई विल कीप ऑन विजुअलाइजिंग दैट आई विल बाय वेदांता एट दिस प्राइस, आई विल प्लेस माय स्टॉप लॉस हियर and I will wait. It might take 2 days or 3 days or 4 days. I will keep on waiting. Okay. And once it reaches to my target level, just before that, I will exit. So I will keep on visualizing it. And once I start visualizing and once I practice this visualization for a few days, I will start automatically, it will start getting implemented in real life. Automatically I will start following the rules basically. It is not like some miracle will happen, but automatically I will start following my rules. Otherwise, I was compromising my rules because of FOMO, because of all the wrong habits that I have done. Okay. So this was the key that I wanted to convey. How to become a successful trader. It's all a mind game. That's why I said it. It's all a mind game. It will take some time, but obviously it will save a lot of money. When it comes to trading, it will save a lot of money. You will be away, you will make yourself away from lot of mistakes. Right, Neeraj? And Neeraj, yes. In fact, if you go through that video, नीरज का जो मेरा वीडियो है ना, जो मेरे ख्याल से उसी को सबसे ज्यादा व्यूज मिले अभी तक रिलायंस के वीडियोस में से, जो एक बार नीरज और उनकी वाइफ आई थी, है ना,
अगर आपने नहीं देखा होगा डॉक्टर शिव जी तो आप देख लो, मैं लिंक शेयर करता हूँ बाद में। तो नहीं उसमें देख नहीं नहीं देखा, बहुत लंबा वीडियो है, शायद से 20-1 मिनट का वीडियो है, तो जिसमें नीरज जी ने उनका एक्सपीरियंस शेयर किया था। मैं ये वीडियो भी पोस्ट करूंगा तो इसमें भी वो नीरज जी के वीडियो का लिंक डालूंगा। तो उसमें भी नीरज जी ने सबसे बड़ी बात उस वक्त, क्योंकि देखो मैं वो वीडियो ना बार बार देखता हूँ, है ना, कोई भी चीज बार बार देखेंगे ना, कोई भी मूवी भी जितनी बार देखोगे आपको नया नया चीज उसमें से सीखने को मिलेगा। तो एक चीज जो नीरज जी ने बात की थी जो काफी इजीली, मतलब बोलते बोलते उन्होंने कह दी ना, तो वो ओवरलुक हो जा रही थी। और वो एक चीज मेरे को अभी भी, मतलब उनकी आवाज, उनका वो जो जिस तरीके से उन्होंने बोला है ना, वो मेरे को याद है, जब एकदम म्यूजिक की तरह प्ले करता है मेरे माइंड में, कि सर मैं रुकता हूँ, मैं बहुत रुकता हूँ, है ना नीरज जी, मैं बहुत रुकता हूँ और फिर ट्रेड लेता यस सर। तो मेरा रूल वही है, वो ट्रेड लाइक ए लॉयन। वो जो शेर बैठा रहता है ना, वेट करता रहता है, हूँ। Exactly. वैसे ही मैं वेट करता रहता हूँ। अगर मेरे लेवल पे नहीं आया तो वो नहीं आया, फिर मैं नहीं लेता उसको। और लेवल पे आ गया तो मैं ये नहीं देखता कि इससे डाउन चला जाएगा, वो मैं एंटर कर देता हूँ। वो कन्विक्शन जो चीज है ना, वो आना बहुत जरूरी है। और कन्विक्शन आएगा प्रैक्टिस से, प्लस नॉलेज से। नॉलेज तो आपने दी है सर, प्रैक्टिस करना हमारा काम है, तभी हम प्रो ट्रेडर बन सकते हैं। और इतना टफ नहीं है। गिरीश सर की क्लास ज्वाइन करो, उसके बाद आप मतलब सर आप कैमरा अपना ऑन पूरा करो। कुछ, हाँ, मैं कह रहा हूँ सर कि आपकी क्लासेस ज्वाइन करें, मतलब जिसको भी नॉलेज चाहिए। प्लस आपने अपना काम कर दिया, आपने नॉलेज दे दी कि हाँ ठीक है, आपने तो मतलब गाइडेंस ही चाहिए होती है ना, वो आप दे दिया। अब उस गाइडेंस पे कौन प्रैक्टिस करके चलेगा? कुछ कभी गिरेंगे फिर संभलेंगे, तभी जाके कहीं मतलब अच्छा ट्रेडर। मतलब अगर कहीं भी आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप डॉक्टरी कर रहे हैं, या कुछ भी आप किसी प्रोफेशन में हैं, तो थोड़ा बहुत गाइडेंस चाहिए आपको। आपको खुद की स्टडी प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है ना। अगर आप अकाउंटिंग है तो आपको सॉल्व करने पड़ते हैं जो अकाउंटिंग के सम है। उसी तरह प्रैक्टिस जरूरी है। जैसे ही प्रैक्टिस होगी आपको कन्विक्शन आएगा, तो आपको पता होगा। आपको अगर लॉस भी हो रहा है ना, तो आपको पता है कि ये ट्रेड मेरा लॉस में बुक नहीं होगा, इसमें मैं प्रॉफिट निकाल के रहूंगा। अगर आप कन्विक्शन है आपका, और एसएल पे तो निकलना है ही, उसमें तो कोई इफ एंड बट है ही नहीं। उसमें ये नहीं देखना कि यार नहीं मेरा तो लास्ट ट्रेड में तो एसएल करके ऊपर चला गया था तो ठीक है। उससे लास्ट टू लास्ट ट्रेड में आपने 50,000 लाख रुपए बुक भी तो किए थे। तो अगर आपका रूल से अगर आप चल रहे हैं, तो कभी भी आपका मंथली मतलब डेली आपका लॉस हो सकता है, मंथली आपका लॉस नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि आपका जो एवरेज मंथली आएगा वो प्रॉफिट ही आएगा, अगर आप रूल से चल रहे हैं। रूल्स बदल दिए, एक ही स्ट्रेटजी भी काम नहीं करेगी, स्ट्रेटजी भी बदलते रहना पड़ेगा। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, मुझे मतलब स्ट्रेटजी के नेम्स आज भी याद नहीं है सर, मतलब बताए थे सर ने, बट मैं अप्लाई कर सकता हूँ मार्केट में, लाइव मार्केट में करके दिखा सकता हूँ कोई भी स्ट्रेटजी उसके अकॉर्डिंग। नेम तो सर ही देंगे कि हाँ भाई नीरज सिचुएशन तूने ये डिपेंडिंग वाली अपॉन दी स्ट्रेटजी। सिचुएशंस ना, आप वैसा जैसा यस मार्केट में सिचुएशन रहेगा उस तरीके से आप स्ट्रेटेजी बना के करोगे। नाम में क्या रखा है, डेफिनेटली सर। किसने बोला था वो, नाम में क्या रखा है? हाँ सर, नाम नाम नहीं है, बट मैं ये बता सकता हूँ कि हाँ ऐसे हम पैसा कमा सकते हैं। पैसा कमाना सर आपने सिखा दिया है। तो मैं तो तो बहुत लोग पूछते हैं कि नीरज कैसे इतना सक्सेसफुल ट्रेडर, मतलब आप जो स्क्रीनशॉट्स वगैरह, अभी तो काफी दिनों से आपने किया नहीं कुछ, बट आप जो स्क्रीनशॉट्स वगैरह शेयर करते थे ना, तो लोग बोलते थे कि यार नीरज को ही कैसे जमता है, हम लोग को क्यों नहीं जमता। तो अभी कल डिफरेंस है करूंगा ना, सर। यही मेरा डिफरेंस है आप कि पहले से मेरा करते थे कि मेरा भी बाद में ये कोर्स गिरीश का कोर्स करने के बाद में स्टार्ट किया? नहीं, गिरीश सर ने ही गाइडेंस दिया है। मतलब पहले मैं करता था, बट सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं था मैं। बट गिरीश सर का मैंने कोर्स किया, तो उन्होंने बहुत बेसिक से स्टार्ट किया, और उनके बहुत सारी चीजें होती है जो मुझे बहुत मतलब मेरे माइंड को स्ट्राइक करती हैं। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, जैसे वो मंकी वाला एग्जांपल है। और गिरीश सर की स्टूडेंट मैं नहीं, मेरी वाइफ भी है, हम दोनों एक साथ ही ट्रेडिंग करते हैं। और अब मतलब अगर स्क्रीनशॉट की बात है, तो आज संडे है, कल मैं स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा, आप देखना। मैंने अभी भी होल्ड किया हुआ है अदानी में, अदानी की पुट ऑप्शन ली हुई है। और आप बिलीव नहीं करोगे, आप उस पे जितना अमाउंट कोट करेंगे ना, उससे ज्यादा मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर करके दिखाऊंगा। मैं मतलब ईयरली पैकेज
कल निकाल लूंगा मैं। क्या बात है। फिर हमने 6 महीने अपने आराम से कोई ट्रेडिंग करो ना करो, और कल ही डालता हूँ मैं ग्रुप में। हो सकता है कि कल अगर मेरा टारगेट नहीं आए तो मैं बजट वाले दिन उसको बुक करूं, तो फिर मैं 1 तारीख को डालूंगा स्क्रीनशॉट। तो यही है, तो यही डिफरेंस है मेरा ना, डिफरेंस। काफी सारे एक दो मेरे नए नए स्टूडेंट्स ने आपको फोन भी किया था, राइट? मैंने ही बोला था कि यार आपको अगर नीरज जी से कोई गाइडेंस चाहिए तो आप बिंदास फोन करो, वो ग्रुप में है। अगर वो फ्री यस। रहेंगे, किसी काम में नहीं रहेंगे तो आपको बताएंगे। तो डिफरेंस क्या है कि व्हाई हाँ जी, व्हाई देयर इज सो लाइक डिफरेंस बिटवीन व्हाई नीरज इज सक्सेसफुल एंड व्हाई अदर्स आर नॉट येट दैट सक्सेसफुल, बिकॉज ही इज फॉलोइंग द रूल्स। ठीक है, पीपल जो जैसे मैंने डेफिनेटली बोला सर। ना, हाँ, बाकी लोगों का क्या होता है कि जो मेरे साथ में भले मैंने सिखाया, लेकिन मेरा भी तो वही हुआ ना कि मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आने लग गया, 1 मिनट 5 मिनट, थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया ना, ऐसा लगने लग गया मैं भगवान हूँ, राइट? तो उसकी वजह से गलतियां होने लगी, और एक बार वो डिप्रेशन आ जाता है ना माइंड पे, तो फिर उसमें से निकलना थोड़ा, बिकॉज देन यू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ रिकवरिंग योर लॉसेज एज अर्ली एज पॉसिबल, एंड while डूइंग दैट यू स्टार्ट टेकिंग एग्रेसिव ट्रेड्स छोटे टाइम फ्रेम में, कैसे जल्दी से जल्दी रिकवर करूं, है ना? क्योंकि फिर बड़े टाइम फ्रेम पे काम करना इज वेरी स्लो प्रोसेस ना, लेकिन मेरे को फास्ट चाहिए सर, है ना? ये गलतियां होती है, लेकिन डेफिनेटली नीरज जी का वही सर। है, और वो जिस दिन आप सर, मेरा मानना है जिस दिन आपका लॉस हो जाए उस दिन आप लैपटॉप बंद कर दो। इवनिंग में आप स्टार्ट करो, इवनिंग में क्रूड है, कमोडिटी है, रात को 11:30 बजे तक मार्केट चलती है। ठीक है, बैंक निफ्टी में आपको लॉस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बट उस टाइम पे अगर आपने बोला नहीं मैं तो 3:30 से पहले मुझे रिकवर करना है, तो आप अपनी कैपिटल पूरी वॉश आउट करके जाओगे। क्योंकि आपकी साइकोलॉजी उस टाइम पे है ना, जो माइंड सेट होता है वो ठीक नहीं होता आपका। आप सोचो अरे यार पुट में लॉस हो रहा है, मैं कॉल ऑप्शन में चला जाऊं। जस्ट ये आप एनालिसिस नहीं करोगे अरे यार पुट में है, अब रिवर्सल का आ गया, सपोर्ट पे आ गई है मार्केट, सपोर्ट ब्रेक तो होने दो, तब आप देखना। लेकिन वही है ना कि उस टाइम सिर्फ ये चलता है यार यार मेरे 5,000 का लॉस चल रहा है, उसको मैं कैसे एटलीस्ट मैं कोस्ट पे तो निकल जाऊं। वो होता नहीं है। आप लैपटॉप बंद करो, शाम को आओ, आप क्रूड है, नेचुरल गैस है, और पूरा रूल सेम चलता है। जो गिरीश सर टेक्निकल एनालिसिस सिखाएंगे वही एनालिसिस आपका हर जगह चलेगा, क्रूड में भी चलेगा, नेचुरल गैस में भी चलेगा। वही आपका फॉरेक्स में भी फॉरेक्स में मैंने स्टार्ट नहीं किया है, बट फॉरेक्स में भी चलता होगा। मतलब फॉरेक्स में आई चलता कांट, है, लेकिन मतलब फॉरेक्स मैंने अपने यहाँ किया पर नहीं है तो लीगल मैं, नहीं है, तो आप मत घुसो उसको। फॉरेक्स आपको करना है अच्छा तो वो मैंने जो किया भी नहीं है। करो भी मत, और उसके फॉरेक्स और ये क्रिप्टो, ये दो से फिलहाल, फॉरेक्स है अच्छा चीज, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है उसमें, लेकिन जो भी प्लेटफॉर्म्स है वो सारे सिस्टम के लूपहोल्स यूज करके होते हैं, तो इट इज नॉट लीगल इन लाइक एज एन इंडियन सिटीजन। आपको लगेगा कि वो क्या नाम है, काफी सारे ब्रोकर्स है, नाम क्या लेने का किसका, तो नहीं मत, तो काफी सारे सेलिब्रिटीज उसके एडवर्टाइजमेंट करते हैं, बट स्टे अवे फ्रॉम इट। अगर आपको फॉरेक्स में करना है, जो एनएससी के वेबसाइट पे, मतलब एनएससी के थ्रू जो भी करेंसी पेयर्स है, यूएसडी आईएनआर है, जेपीवाई है, यूरो है ना, और फिर क्रॉस करेंसी पेयर्स भी हमको मिलते हैं वहां पर ट्रेड करने, आप उसमें करो, नहीं सर, बिंदास करो। जरूरत नहीं है सर। मतलब क्रूड में और निफ्टी बैंक निफ्टी शेयर्स में इतना हो जाता है कि किसी और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। बस कन्विक्शन आपका बिल्कुल सॉलिड होना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल मैं शेयर करता हूँ, मतलब फ्राइडे का ट्रेड मैंने क्रूड में किया था, और बहुत गिर गया था क्रूड। अगर आप देखेंगे ना, आप क्रूड का चार्ट ओपन करके देखना, बहुत ही गिर गया था। और मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पे केवल 7 पॉइंट का मैंने अपना स्टॉप लॉस रखा था, और एमसीएक्स में ना, उसी पे मैंने मतलब क्रूड, यस सर। ये डेली चार्ट है तो बेरिश एनगल्फिंग बन गया इसके अंदर। वो बिल्कुल कि ऊपर रेसिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो आप डेली में देखेंगे बिल्कुल अगर आपका, ये तो रेजिस्टेंस से ही घुमा है ना बराबर। हाँ, बार बार तो फिर आपको यहाँ पे आ रहा है, बिल्कुल स्ट्रोक होना चाहिए। आप 8-10 ऐसे रखो कि जो मदर कैंडल बनी है, जो राइट साइड में जहां से स्टार्ट किया है गिरीश सर ने मार्किंग, वो मदर कैंडल अगर ब्रेक होगी तो आपको एग्जिट होना है। और मदर कैंडल अगर ब्रेक नहीं हुई तो शोर शॉर्ट आपको
100 पॉइंट्स मिलेंगे क्रूड में। मतलब अगर 2 लॉट लिए हैं तो आप 100 पॉइंट में लगा लो, 100 पॉइंट का वो है, तो 20,000 रुपये आपके उस दिन आएंगे। और बिल्कुल आंख बंद करके बैठ जाओ, एसएल लगा के छोड़ दो। बाद में अगर एसएल नहीं हुआ और डाउन साइड चला गया तो अपना टारगेट लगा के आंख बंद करके सो जाओ। सुबह उठोगे अच्छा, तो मेरा 20,000 का मैसेज दिखेगा आपको। एसएल के साथ मेरा एक इशू होता है कि मैंने जैसे बताया, मैंने फ्यूचर्स में किया था, तो एसएल हिट कर जाता है, लेकिन ना वो शायद से वॉल्यूम्स कम होने की वजह से ना वो एग्जीक्यूट नहीं होता हो पाता। मतलब प्राइस फिर मेरा नीचे चला गया। तो मैंने स्टॉक मार्केट अपना मार्केट पे मार्केट एसएल रखते हो या फिर इस पे रखते हो? लिमिट एसएल लिमिट लगेगा ना। सो देखो उसमें भी कोई भी ऑर्डर हो, फिर वो स्टॉप लॉस हो या टेक प्रॉफिट हो या एंट्री हो, वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होता है ना। हाँ हाँ कभी से फॉर एग्जांपल आपने कौन सा ट्रेड था आपका, डॉक्टर लाल का ना, हाँ क्या हाँ। प्राइस चल रही है उसकी आजकल? अभी क्या चल रहा है पता नहीं, मैंने मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ तो प्राइस तो एटलीस्ट सही बोलो बस। बहुत गिर गया ना, 2050 पे चल रहा है। ओके, तो मान लो 2000 अपना आपका शॉर्ट पोजीशन, ठीक है, मान लो 2050 से आपने बेच दिया, 2060 का आपका स्टॉप लॉस। तो आपने जब वो स्टॉप लॉस रखा ना, तो मतलब आपका बाय ऑर्डर हुआ 2060 का, राइट? तो आपके पहले भी काफी लोगों ने 2060 का बाइंग ऑर्डर लगा के रखा होगा ना। बराबर। आपने कब लगाया? वो आपके पहले बाकी लोगों का पहले एग्जीक्यूट होगा, फिर आपका नंबर आएगा, है राइट ना, राइट। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस। तो हो सकता है कि 2060 पे बहुत ज्यादा ऑर्डर्स है, तो प्राइस 2060 पे आई, आपको चार्ट पे दिख रहा है, लेकिन लेकिन आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ। एग्जीक्यूट नहीं हाँ, हुआ, नीचे चला गया। और फिर प्राइस नीचे चला गया। तो दैट हाँ, हैपेंस। तो तो उसके लिए क्या करने का, हाँ, उसके लिए क्या करने का? क्या करना? तो आप अगर स्टॉप लॉस पहले तो, मैं अभी अगर मैं स्क्रीन के सामने बैठा हूँ, ऑब्वियसली आपके लिए शायद वो पॉसिबल नहीं होगा हर बार स्क्रीन के सामने बैठा। तो अगर आप अभी जीरोधा में अगर है तो आपको मार्केट डेप्थ में दिखता है ना, 20 डेप्थ तक काफी बार दिखता है, काफी बार नहीं भी दिखता है जीरोधा में, है ना। तो हाँ, अगर आप 2060 का स्टॉप लॉस लगा रहे हो ना, तो देखो पहले कि वहां पर कितने ऑर्डर्स है। अगर वहां पर बहुत बल्क ऑर्डर्स है ना पेंडिंग, है ना, तो आपका नंबर आने में टाइम लगेगा, क्योंकि पहले बाकी लोगों का हिट होगा ना। तो आप ओके, 5 पैसा कम कर दो ना, है ना। अच्छा, 2059 रुपीज 95 पैसे लगा दो, तो आपका नंबर उनके पहले आ जाएगा, ओके, है ना। तो या एंट्री का एग्जिट करने के लिए खास करके मैं ऐसा ही करता हूँ। से फॉर एग्जांपल मैंने कोई बाय किया है, हाँ, भले मैं स्टॉप लॉस के लिए, मैं तो स्टॉप लॉस लगाता नहीं हूँ इन द सेंस, क्योंकि आई एम फ्रंट ऑफ डेस्क ना, यूजुअली व्हेन आई एम ट्रेडिंग, मैं तो पूरा टाइम स्क्रीन के सामने रहता हूँ। तो मैं पहले से ऑर्डर कभी लगा के नहीं रखता। वो मेरा है थियोरेटिकल, मेरे को मालूम है कि इसके नीचे गया तो मेरे को निकलना है ना। तो अगर वो मेरा क्राइटेरिया मैच हुआ तो मैं मैन्युअली एग्जिट कर जाऊंगा, ठीक है। तो मैं लगा के नहीं रखता स्टॉप लॉस। हाँ, लेकिन टेक प्रॉफिट के लिए, से फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी बाय पोजीशन किया है और मेरे को मैंने 980 पे मान लो कोई चीज बाय किया और मेरा 1000 का टारगेट है, ठीक है। तो इसमें कैसा है, तो वो हर्ड मेंटेलिटी वाला सिचुएशन आता है। 1000 1000 बीइंग ए राउंड फिगर, वहां पर बहुत सारे ऑर्डर्स रहेंगे, है ना। तो मैं क्या करता हूँ फिर, 999 रुपीज 50 पैसे डाल के छोड़ देता हूँ। मेरे को 50 पैसा नीचे ही होता है, मेरे को एग्जिट मिलना जरूरी है। फिर वो 50 पैसा गया चले, ठीक है ना। और फिर अगर मान लो अगर मैंने नहीं लगा के, टारगेट भी मैंने अगर लगा के नहीं रखा, प्राइस अगर 999 के आसपास आ रहा है ना, तो मैं देखता हूँ, फिर अभी मेरे को सेल करने का ना। तो बेस्ट सेलर क्या प्राइस का है, मान लो बेस्ट सेलर है 998 रुपीज 50 पैसा ना, बेस्ट सेलर 998 रुपीज 50 पैसा। लेकिन मेरे को निकलने का है ना, तो मैं उसके आगे 5 पैसा कम करके डाल के आगे देखिए, है ना, ओके, 998 रुपीज 45 पैसा या 40 पैसा कर दूंगा, तो मेरा नंबर पहला आ जाएगा, मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड आई विल एग्जिट फ्रॉम माय पोजीशन। तो इट इज पॉसिबल व्हेन यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ दिस, अदरवाइज यू हैव टू सैक्रिफाइस फ्यू पिप्स एंड एग्जिट योर पोजीशन बिफोर, लाइक जहां पर सबसे ज्यादा क्वांटिटी है उसके उससे 5-10 पैसा कम करके आप ऑर्डर लगा के रखो, यू विल गेट योर एग्जिट। अनदर थिंग, ये जो अपर सर्किट और लोअर सर्किट रहता है, दैट इज फॉर द डे और अ पर्टिकुलर टाइम? दैट इज फॉर डे लेकिन obviously, but हाँ, the बट market stops for 15 minutes.
सर्किट का फंडा क्या है, सर्किट कैसे काम करता है कि देखो दो, मतलब एक तो व्हेन द प्राइस रीचेस टू द प्राइस लेवल ऑफ आइदर हायर सर्किट लेवल और लोअर सर्किट लेवल, तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है कि से फॉर एग्जांपल 10% का अपर सर्किट लग गया, ठीक है, ऑब्वियसली प्राइस ऊपर गया मतलब लोगों ने बाइंग किया, इसके लिए प्राइस ऊपर गया, लेकिन लोगों ने बाई किया इसका मतलब किसी ने सेल भी तो किया ना, तभी तो वो लोग बाय कर पाए, है ना। तो बराबर। बिकॉज अपना जो मार्केट है वो रेगुलेटेड मार्केट है ना, बिटकॉइन बिटकॉइन जैसे रेगुलेटेड नहीं है ना। तो हम लोग का क्या है, सेबी ने इन्वेस्टर्स का या ट्रेडर्स का ख्याल करने का है, हम लोग दे हैव टू टेक केयर ऑफ ना देम, राइट। तो उन्होंने क्या बोला कि भाई अगर 10% का अपर सर्किट है तो वहां पर जाने के बाद में हम लोग 10-15 मिनट के लिए स्टॉप कर देंगे। स्टॉप Okay. करेंगे मतलब क्या होगा कि जो लोग अगर लॉस में है ना, दे शुड गेट अपॉर्चुनिटी टू एग्जिट देयर पोजीशन, है ना, क्योंकि अदरवाइज फिर 10% से ऊपर चला गया तो सीधा ऊपर का 10% का ले लेगा, तो उन लोग का लॉस बढ़ जाएगा। तो 15 मिनट के लिए नया ऑर्डर कलेक्शन बंद हो जाता। ओल्ड Okay. पोजीशंस जिसका है, किसी ने बाय किया किसी ने सेल किया, दे कैन एग्जिट देयर पोजीशंस, न्यू ऑर्डर कलेक्शन इज स्टॉप। So those who are already in the trade can exit their positions. Understood? Okay. अगर मुझे बाय करने का है, then I will have to wait for the circuit limit to like 15 मिनट खत्म होने के बाद में, then I will be able to take a new position. हाँ, बट देन सपोज से फॉर एग्जांपल लोअर सर्किट लिमिट है उसका, मतलब 1000 पे चल रहा है, और सपोज लोअर सर्किट लिमिट 800 का है, तो 900 का, हाँ, तो 20% हो हाँ जाएगा, हाँ। 900 का है, तो 900 पे आ गया, लोअर सर्किट लग गया। लोअर सर्किट लगने के बाद में फिर से मार्केट खुलता है, तो वो उसके बाद में 900 के नीचे फिर से जा सकता जा है। सकता है, वो 15 मिनट के लिए हॉल्ट किया ना। ओके भाई ओके तुम लोग बचने का है तो बचो, अगर बाय पोजीशन है तो निकलने का है, मैंने 15 मिनट मार्केट रोका तुम्हारी, ओके। है ना। अगर तुमको ऐसा लगता है कि नहीं 900 से वापस 1000 पे आएगा, देन इट इज योर कॉल, बट देन आफ्टर 900 देन देयर विल बी 10% फ्रॉम 900। और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी काफी सारे वेज हैं, और मतलब गिरीश सर बताते हैं क्लासेस में अपने कि कैसे हम नहीं आप बोलो, आप identify बोलो। कर सकते हैं। वैसे मैं जो अपनी स्ट्रेटजी बनाता हूँ, मैं वॉल्यूम देखता हूँ, और वॉल्यूम में बेस्ट पार्ट ये है कि वो, मतलब मुझे तो नहीं लगता, आज तक किसी ने मुझे बताया नहीं, गिरीश सर ने ही बताया था मुझे भी, कि वॉल्यूम लाइन में हमें कलर से कोई मतलब नहीं है, वो रेड है ग्रीन है कुछ भी है। वॉल्यूम अगर हाई है, वॉल्यूम हाई का मीन्स क्या है, हम कंपैरिजन करेंगे सेम स्टॉक का पास्ट हिस्ट्री, क्योंकि 1 लाख शेयर किसी और शेयर के लिए ज्यादा हो सकते हैं और किसी के लिए कुछ भी नहीं है, तो पास्ट उसका वॉल्यूम चेक करेंगे। अगर वॉल्यूम हाई जा रहा है, दैट मीन जिस ट्रेंड में भी वो शेयर गया है उसी ट्रेंड में वॉल्यूम जा रहा है। हम बाय सेल तो हम पता कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, अगर लोअर सर्किट लगाए तो वो डाउन जाएगा। तो एज मतलब वहां पे आप स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी आप यूज कर सकते हो, इमीडिएटली आप एंटर हो, और इमीडिएटली विद इन मतलब लेस देन 10 सेकेंड्स आप अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हो, 20-30 पॉइंट। और ऑप्शंस में अगर आप कर रहे हो, और 20-30 पॉइंट बहुत होते हैं, क्योंकि लोड साइज ह्यूज होता है वहां पे, किसी का 1000, 2000, 5000 होता है, 20 पॉइंट भी आ गए तो लाख रुपए हो गए आपके। तो ये तो छोटी मैं छोटी तो स्ट्रेटजी वो अपना प्रैक्टिस से भी आती है। आपका जो वीडियो में आपने जब ये बताया ना कि सर्किट लेवल पे, यूजुअली मेरा कैसा था कि एक बार बहुत ज्यादा हो गया, सर्किट ले लिया ना, फिर मैं नहीं करूंगा ट्रेड उसमें, ऐसा मेरा ये था। लेकिन आपके साथ में मीटिंग होने के बाद में एक दिन, मतलब कुछ महीनों बाद, जी को अपर सर्किट लगा, ठीक है। तो मैं और मेरी वाइफ बैठे थे स्क्रीन के सामने, तो मैंने बोला यार ये नीरज वाला स्ट्रेटेजी करते क्या सर्किट वाला, वाइफ बोलती थी ट्राई करके देख, है ना। तो जी तो अपर सर्किट पे रुका हुआ था, लेकिन ऑप्शंस हम लोग बाय कर सक रहे थे, है ना। ऑप्शंस रुकता नहीं है, ठीक है, स्क्रिप्ट रुकेगा, ऑप्शन नहीं रुकता। ऑप्शन यू कैन बाय, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक लॉट फॉर्मूले वाले, चल पहली बार कर रहा हूँ तो एक लॉट कॉल ऑप्शन बाय कर लिया, ओके। और फिर जैसे ही सर्किट खुला, तोड़ फोड़ ऊपर गया वापस, फिर मैंने तुरंत प्रॉफिट बुक कर लिया। मैंने बोला चल नीरज के साथ में मीटिंग करने का कुछ तो फायदा होगा। थैंक यू सर। तो तो फिर ये बाद सारी में ऐसा स्ट्रेटजी, आया कि यार 2 लॉट खरीदना चाहिए था। हाँ, तो आपने मतलब जो
अभी ले लिया क्या क्लासेस या मतलब अभी इन प्रोग्रेस है गिरीश सर के साथ? अभी जो क्लासेस है मेरे मॉर्निंग का 7 to 9 का बैच अभी खाली है। नहीं, मैं सर से पूछ रहा था सर कि अच्छा, इन्होंने ज्वाइन कर ये लिया है क्या क्लासेस? अरे ये तो हमारे शायद आपसे पहले डॉक्टर शेजू ने कोर्स किया। और अच्छा, हाँ, और उसके बाद में भी अभी रिसेंटली एक बार उन्होंने रिवीजन भी किया। फिर तो कहीं कहीं और क्वेश्चन नहीं होना चाहिए फिर तो आपकी प्रैक्टिस ही है और कुछ नहीं। नहीं, क्योंकि उनका उनका बहुत कैसा है, सारी चीजें हैं। उनका शेड्यूल कैसा है कि वो क्लिनिक में जाना होता है, बच्चे लोग का भी है ना। तो एंड हिज वाइफ इज आल्सो ए डेंटिस्ट, बोथ आर डेंटिस्ट, तो दोनों को अपने अपने क्लिनिक में जाना होता है। हाँ, सर देखो 9 बजे से 11 बजे तक मार्केट ओपन रहती है, 11:30 तक मॉर्निंग में, 9 बजे से और रात के 11:30 बजे तक। और इस पर्टिकुलर टाइम पे आपको कोई भी 2 घंटे निकालने होते हैं। He's और talking including commodity. हाँ समझा यस, समझा समझा। और इसमें अगर आपने 2 घंटे निकाल लिए ना तो मतलब बंदा क्लिनिक भूल जाएगा, मुझे इतना पता है अगर कन्विक्शन से आ नहीं, रहे हो तो। मुझे मुझे पता है, मुझे वो रियलाइजेशन मुझे काफी टाइम पहले ही हो चुका है। मैंने एक्चुअली क्लिनिक के टाइमिंग से मैंने चेंज कर दिया। मैं नाउ आई गो फ्रॉम लाइक 11 o'clock टू 7:30 ऐसे कर दिया, एक सिंगल स्ट्रेच पे कर दिया। एंड वन ऑफ द रीजंस फॉर डूइंग दैट वाज टू स्पेंड सम टाइम इन द मॉर्निंग, से फॉर एग्जांपल लाइक अराउंड 9:15 टू अराउंड 10:30 11 10:45 के आसपास का जो टाइम है वो मार्केट के लिए वो वैसे मतलब मैंने सोचा हुआ था। तो वो चल भी रहा था, लेकिन फिर बीच में अभी जैसे मैंने बताया, मैंने मैं छोटा सा ब्रेक वापस से लिया हुआ है। एंड अभी ऑल्सो मैंने पता नहीं नीरज, आपको जरूरत नहीं है बट स्टिल आपको मैंने ऐड नहीं किया था, एक ग्रुप मैंने बना के रखा है। क्योंकि अपना वाला ग्रुप में बहुत ज्यादा अच्छा मतलब लोग बहुत कम एक्टिव है, जो मेन ग्रुप है, तो जिसमें एक्टिव लोग है ना, उन लोग का एक मैंने अलग से ग्रुप बनाया था, ट्रेडिंग आइडियाज एंड इंसाइट्स करके। आपको मैंने उसमें ऐड नहीं किया, आपको उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन अभी याद आ गया तो ऐड कर दूंगा। बट डॉक्टर सिजू, यू आर देयर ना इन दैट ग्रुप, ट्रेडिंग आइडियाज एंड इंसाइट्स, यस यस यस। है ना। तो आप उसमें जो मैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस वगैरह का जो शेयर करता हूँ ना, आप उसको एकदम इग्नोर मारेंगे चलेगा, लेकिन जो मैं डिलीवरी बेस्ड वाले जो शेयर करता हूँ ना, तो आप उसमें अपना इन्वेस्टमेंट का जो रूल्स हमने सीखा था ना, उस हिसाब से आप उसमें कर सकते हो, बिकॉज बहुत अच्छे रिटर्न्स आता है ना डिलीवरी बेस्ड में भी। ठीक है, आप ये आपका होमवर्क है, अभी आज छुट्टी है क्या आपको? नहीं, डिलीवरी बॉयज का मेरा मेरा क्या इशू हुआ है, आई समहाउ हैव द वेरी गुड नैक ऑफ पिकिंग अप द एब्सोल्यूट रॉन्ग स्टॉक्स। नो नो नो, यू डोंट पिक अप ना, आई एम नहीं शेयरिंग नहीं इट ना। नहीं 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 नहीं, आउट ऑफ व्हाट यू हैव शेयर्ड ना। अच्छा, मैंने उसमें से सबसे जो, और से फॉर जो एग्जांपल, गलत गया रहेगा वही पकड़ा आपने। हाँ मैंने से फॉर एग्जांपल नहीं, मैंने दो बाय किए थे। एक वाज वन वाज दिस वन क्विक हील एंड वन वाज हाँ। टीटीएमएल। दोनों भी आपने जैसे बोला था, मतलब मेरे ख्याल से इट नेक्स्ट डे या फिर उसके नेक्स्ट डे, मतलब इट वाज इन इन प्रॉफिट। प्रॉफिट देन एग्जिट नहीं किया। हाँ वो प्रॉफिट में था, लेकिन फिर उसके बाद मतलब वो पर्टिकुलर टाइम पे ना मैंने सभी शायद लिया और फिर मैंने रखा, मतलब देखते हैं करके उसको छोड़ा। बट बाय द टाइम आई वाज लुकिंग एट इट अगेन, वो तब तक उसका प्राइस ऊपर जाके फिर वापस से नीचे जा चुका था, और अभी वो नीचे गया तो नीचे ही। टीटीएमएल दोनों भी देखो फंडामेंटली स्ट्रांग है। हम्म, टीटीएमएल है, एएसएल है, तो उसमें ठीक है, मतलब आई माइट बी रॉन्ग, बट उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि वो दो एएसएल और टीटीएमएल दोनों के पीछे टाटा का नाम है यार। नहीं तो मैंने लॉन्ग टर्म के लिए भी रहा तो प्रॉब्लम नहीं। टीटीएमएल एंड क्विक क्विक और क्विक भी तो फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो इट विल कम बैक, नो इश्यूज। उसमें कुछ फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है, तो कुछ करने के लिए। मैं उन स्टॉक्स के बारे में बोल रहा हूँ जो एकदम घिसे पिटे लोग कोई भी खरीद उठा के खरीद के बैठ जाते हैं ना, तो उसमें अटक गए तो फिर वांदा हो जाता है, क्योंकि मतलब तेरा वेरी रेयर चांसेस ऑफ रिकवरी। लेकिन अगर आप ये ट्रेडिंग आइडियाज एंड इनसाइट्स का रिसेंट का अगर आप देखोगे रिजल्ट, आप इसमें से है ना एक कौन सा मैंने किया था, मतलब वहां से आगे आप देखते रहो बस। देखो इसमें है ना स्वान करके है ना,
इसी का प्रॉफिट आएगा मंत्रा इसकी ओसवाल सीसी। ये जो है ना, मतलब आपको तारीख बता देता हूँ। 21 जनवरी के बाद में जितना भी मैंने किया है ना, जितना भी दिया है ट्रेड आइडियाज, आप उठा के देखो। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सारे में प्रॉफिट होगा, एक दो में लॉस होगा, बट यू चेक द रिजल्ट। ऑन एन एवरेज यू हैव गॉट मोर देन 20% आराम से। एक एक को तो मतलब मैंने वो दिया था ओसवाल सीड्स तो 100% से ज्यादा शायद मिला है। और मॉडर्न डेयरी तो क्योंकि मेरे मतलब मेरे भाई भाई ने ही खरीदा है, 12 रुपए में समथिंग खरीदा था वो। 12 रुपए समथिंग इज इज बाइंग प्राइस। तो उसमें मोर देन 100% रिटर्न दिया। तो डिलीवरी छोटे छोटे स्टॉक्स है लेकिन देते हैं अच्छा रिजल्ट। अभी 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 तो जो रिसेंट में मैंने शेयर किया है वो तो 2-2 3-3 दिन में 30-40% दिया, मतलब एक एक हफ्ते में, सॉरी, ठीक है। तो एक एक हफ्ते के अंदर 30-40% रिटर्न कौन देता है? तो ज्यादा लालच नहीं करने का, आ गया 20 तक का प्रॉफिट बुक कर देने का, थोड़ा गरीबों के लिए छोड़ देने का। मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया देखा। अच्छा, किया क्या? वो वाला जो आपको बताया ना, जो चालू करते मैंने आपको बताया था, अच्छा, अल्फा प्लस, वो देखो। हाँ हाँ हाँ। ये पिवोट पिवोट यार पता नहीं क्यों आप ये सारे नहीं नहीं indicators के पिवट, पीछे पड़े। नहीं नहीं वो पिवट नहीं है। वो वाला जो है वो तो बेसिक मतलब जस्ट ट्रेंड लाइंस और सपोर्ट रेजिस्टेंस है। मेगाफोन पैटर्न था उसमें। हाँ लेकिन इसमें भी आपने देखो देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या हुआ है। आपने मतलब जो आपने ट्रेड लिया, ठीक है ना? ये मेगाफोन पैटर्न पे आपने ट्रेड लिया, लेकिन यहाँ पर ब्रेकआउट होने के बाद में डिड यू रियलाइज ये ट्रेंडिंग सपोर्ट जो था उसका ब्रेकआउट नहीं करने के बाद नहीं में वापस। नहीं 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 आई स्टॉप्ड। वो जो लॉस्ट 1.5 डाला ना मैंने, देखो। हाँ, वो तो हाँ समझ गया। उसके बाद में मैंने उसके बाद में मैंने इस ट्रेड किया ही नहीं है। वो दिन के बाद में मैंने ट्रेड लिया ही नहीं है उसके बाद। बट देन नहीं द मैं, फनी थिंग इज कि पूरा का पूरा जो मैंने जो लाइन बना के रखा हुआ है ना, हाँ इट हैज गॉन थ्रू एवरीथिंग। मतलब जैसा प्रॉपर जैसा जाना चाहिए ना वैसे। हाँ, ये तभी बनाया हुआ है ये, मतलब मेरे ख्याल से दिस वन वाज मूड। ये जो पूरा मेगाफोन और जो नवंबर का है। ये मेरे ख्याल से मैंने सितंबर के स्टार्टिंग वगैरह में बनाया हुआ है। सितंबर के स्टार्टिंग के लाइक फर्स्ट वीक में कुछ तो है ना, ये बना के रखा हुआ था। और उसके बाद का पूरा वैसे फॉलो हुआ है। नहीं, यहाँ पर ये मैं शेयर कर रहा था कि यहाँ पर ट्रेंडिंग सपोर्ट तोड़ने के हाँ बाद में वहाँ पर वापस एंट्री लिया उसने, कोई राइट रेजिस्टेंस बना और फिर अच्छा अपॉर्चुनिटी। राइट राइट राइट। बट देन उसके बाद मैंने छोड़ दिया। यहाँ पे सर वो जो मैं डाउन एक गया। चीज ऐड करना चाहूंगा। हाँ बोलो ना सर। जो अगर आप चार्ट देखेंगे ना सर, एक बार चार्ट लगाएंगे क्या सर? सेम वाला यही। हाँ जी, इसमें मदर कैंडल बना है जहाँ पे ये एरो है, और मदर कैंडल बनने के बाद भी, कौन सा ये वाला बोल रहे हाँ हो आप? जी, हाँ ओके, जी, जहाँ पे एरो लगा हुआ है मदर ये ना। कैंडल बना है, और हाँ, हाँ जी, और ये डाउन साइड में ब्रेक दिया, बट वो फेक ब्रेक था क्योंकि उसके नीचे वॉल्यूम नहीं था, तो हमें यहाँ पे एंटर नहीं करना। उसके बाद इसी मदर कैंडल से दो लाइनें खींचनी है, और आप देखो नीचे जहाँ पे HERE का ई है, यहाँ हाँ पे हाँ हमें एंटर करना था क्योंकि हमारी मदर कैंडल ब्रेक हो गई है विद हाई वॉल्यूम। यहाँ पे एंटर लॉन्ग करके पोजिशन। तो आप ये लगाओ ना 2270 पे हमने एंटर किया है, और इजीली अपने 100, 150, 200 पॉइंट आराम से मिलेंगे। लॉन्ग पोजीशन की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ, तो ये नहीं यहाँ पर नहीं सपोर्ट ले रहा है ना, नहीं, ये सपोर्ट ब्रेक हो गया है ना सर। ये फॉल्स ब्रेक हुआ, ठीक है, ये फॉल्स बाउंस ब्रेक किया। हुआ लेकिन वॉल्यूम आ गया, हाँ, वॉल्यूम के साथ ब्रेक हुआ वॉल्यूम है। वॉल्यूम नेक्स्ट कैंडल पे है ना। वॉल्यूम उसका जो नेक्स्ट जो ग्रीन कैंडल बना है ना उस पे है वॉल्यूम। मैं इसमें खोलता हूँ इसको, यहीं पर है ना ऑलरेडी। हाँ आप तो मदर कैंडल किसको बोल रहे हो? ये वाला, ठीक है। नहीं 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 नवंबर, इधर इधर वॉल्यूम अपना वाला, नवंबर, नवंबर में वॉल नवंबर में ये दिसंबर। वॉल्यूम वाला तो ये ग्रीन कैंडल हाँ, हाँ है ना? ये वाला, नहीं 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 आप दूसरे फ्रेम में आप आगे चले गए। ये जो मैं बात कर रहा था ना, मैंने जो आपको चार्ट भेजा ना वो नवंबर
fourth आप यहाँ पर आपका ट्रेड यहाँ पर था पीछे, नीरज शायद इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर, ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट योर ट्रेड, ओके ही इज ओके टॉकिंग अबाउट अदर एनालिसिस। तो मैं कह रहा था सर, जैसे वॉल्यूम के बाद ग्रीन कैंडल बना है, वॉल्यूम तो वाला वो ही मत, ग्रीन कैंडल। हाँ जी, ये कैंडल जिस साइड भी ब्रेक होगा विद हाई वॉल्यूम, उसी साइड हमें जाना है। एग्जैक्टली। अब यहाँ पे जो सेकंड कैंडल है उसने फेक ब्रेक दिया है कि, अभी ये हो गया आपका मदर कैंडल, ठीक है। हाँ जी, इसमें जो सेकंड कैंडल बना है वो फेक ब्रेक है वो। हाँ बराबर, सेकेंड वाला रेड कैंडल है वो फेक ब्रेकआउट, why are you calling it a fake breakout? बिकॉज इट वेंट अप above this candle but it हाँ did not sustain there, so अच्छा that's why it was अच्छा, a तो false break। ऊपर वीक है इसलिए। हाँ नहीं, क्लोज नीचे हुआ ना, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, सॉरी 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 सॉरी, राइट। तो वो ऊपर चला गया लेकिन ऊपर टिका नहीं और वापस अंदर ही आके क्लोज किया उसको, तो उसके दिस वाज ए सेकंड फेल्स कैंडल, ब्रेकआउट। जो थर्ड कैंडल है यहाँ पे हमें ट्रेड लेना है, जो तो थर्ड कैंडल जो, नहीं सर, इसके ये नेक्स्ट, सेकेंड वाला तो डोजी से जैसा बना, ठीक है, मतलब कंसोलिडेशन था, फिर थर्ड कैंडल पे ब्रेकआउट हुआ, राइट, 26 दिसंबर को बराबर, वहाँ 26 वहाँ को पे ब्रेकआउट शॉर्ट हुआ, सो दिस वाज ए क्लियर मतलब कंफर्मेशन फॉर कि भाई, शॉर्टिंग। हाँ। फिर अपना अगर इफ वी कंसीडर दिस एज मदर कैंडल, तो अपना जो इनसाइड बार पैटर्न हम लोग ने पढ़ा था ना, तो मेरे को मदर कैंडल के लो में एंटर करने का, ये ब्रेकआउट दिया मदर कैंडल के लो में, मेरे को एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार एंट्री देके फिर मिला। यहाँ पे तो फिर अपना कन्विक्शन काम करेगा, वो बार बार थोड़ा सा ऊपर जाएगा, हमें 100-200 रुपए का लॉस दिखाएगा, बट हाँ नहीं, हमें पता है कि हमने हमारी स्ट्रेटजी ठीक है, अगर हमारा एसएल हिट होता है तो वी विल एग्जिट, अदरवाइज वी विल कंटिन्यू विद आवर टारगेट। तो इसमें आराम से हमें 100, 150, 200 पॉइंट मिलेंगे, और इतने बड़े शेयर में तो 100-200 पॉइंट तो मतलब लेना भी चाहिए। और कैसा करने का कि व्हेन वी एंटर ना, so what we have to do, say for example, if it is wasting your time now, you hedge your position, and you hedge your position by selling some option. Okay, say for example you have gone short, okay, you have gone short na, so you are expecting the price to go down, but it is not going down na, okay, so till that time you sell one put option, till that time you sell one put option, because if it is wasting time, okay, your put option premium will keep on going down, है ना, अगर वो ऊपर भी जा रहा है तो भी पुट ऑप्शन जो सेल किया है उसमें अभी पुट ऑफ, नाउ यू विल से दैट यार सेलिंग पुट ऑप्शन इट विल कंज्यूम लॉट ऑफ मार्जिन, so buy one far out of money put option first and then sell one put option at the money or near money, okay, so till the time the price is coming down and clearly showing that now your short position is going to give you profit, तभी वो पुट ऑप्शन जो सेल किया ना उसको एग्जिट कर लो, उसमें भी प्रॉफिट ही मिलेगा, और फिर आपका जो फ्यूचर में शॉर्ट पोजीशन है उसमें भी प्रॉफिट मिलेगा, और जो आपने हेज करने के लिए फार आउट ऑफ मनी पुट ऑप्शन बाय किया था ना उसमें भी प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन जब तक, जैसे अपने नीरज जी ने बोला ना कि यार वो भले ही ऊपर जा भी रहा है ना, प्राइस ऊपर नीचे कर रहा है, तो वो आपको तब तक के लिए सुकून रहेगा कि आपका ओवरऑल आप प्रॉफिट नहीं, अदरवाइज जो लॉस दिखाता था ना वो लॉस नहीं दिखा, बिकॉज आपने जो पुट ऑप्शन सेल किया ना वो आपको प्रॉफिट दे, उसको स्टॉप लॉस लगाना, लेकिन ना उसको बिना स्टॉप लॉस के मत रखना, ओके, एटलीस्ट ब्रेक इवन का तो स्टॉप लॉस लगा के रखना, because when it will, if it starts falling then it will start like option selling is a lethal thing ना, अगर आपने एग्जिट नहीं किया तो it might wash out your, राजीव जी how are you? Very fine. So the rule of Reliance Trading Academy is that you have to keep your cameras on. Okay. I will come now. Just a moment. Except Neeraj, me and Dr. Sheju both are ex-BNI members only. Sorry?
So, except Neeraj ji, Ah. me and Dr. Seju both are ex-BNI members only. Okay. In fact, we were part of our LT, and both are my candidates. And Neeraj is my superstar, basically. Okay. I got late actually. I planned to be there in time, but we had a program of BNI today. So this BNI gives you a lot of reference, but it also takes out a lot of opportunities from that. Yes. Today actually Mac is there in Palghar. Okay. You are in Palghar? Yeah, no, Palakkad. This is Kerala. Palakkad. Okay. Yeah. So today Mac and his team is there. Max Srinivasan, if I'm not wrong. Mac Srinivasan, yeah. He's a great personality. Sorry? Great person. He is lot to learn from. So how is like I'll stop recording and then we'll. Yeah, sure.